Guys, welcome to OPSC Wallah, Physics Wallah. So, आज गोटे वेरी इंपोर्टेंट सेशन आमे आनीचु से सेशन रे आमे कंप्लीट पूरा सो ये क्लासेस को कर दो ओके समस्ते फॉलो करो जदि क्लास बट आपण जदि थरे गोटे एका थरे 4-5 घंटा 6 घंटा रे पूरा जदि कंप्लीट तो आपण को स्टार्ट हो भल किछि जिंस ना ओके सो आज स्टॉप माने ये वन फर्स्ट टॉपिक जदि आमे देखिबू सेटला इंट्रोडक्शन टू प्री हिस्ट्री दैट इज क्रोनोलॉजी एंड स्टोन एज जीवा देन नेक्स्ट हला इंडस वैली सिविल जो कहली वन बाय वन गोटिए शॉर्ट्स रे गोटिए वीडियो रे एवरीथिंग यू विल गेट ओके सो विल स्टार्ट नाउ सो ए सेक्शन रे टॉपिक काइया जेतु एटा स्टार्टिंग मु आपन कहबी कि व्हाट इज हिस्ट्री व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड देन देखिबा स्टोन एज जोंडे कि प्री हिस्ट्री के एज या में देखिबा सो क्वेश्चन आसिला कि व्हाट इज हिस्ट्री हमें हिस्ट्री कोन हिस्ट्री समस्त जानते इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट बट रियली इज इट रियली दैट वी स्टडी एवरीथिंग इन द पास्ट इफ यू टेक एन एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ आवरसेल्फ जदि एग्जांपल लेबे आपण कोन भाबुचंती आपण लाइफ रे सब किछि पास्ट विषय मन रखिचंती एवरीडे डे इन डे आउट कौन करिचंती कौन नाही मन रखना कहीं कि ना इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर सो यू कैन रिमेंबर ओनली व्हिच आर इंपोर्टेंट टू यू राइट लेट्स से एज एग्जांपल तुम्हें कहा को प्रपोज कलो कि कहा को किए तुमको प्रपोज कला किंबा किए तुमर बर्थडे तुम्हें केबे सेलिब्रेट करथिलो केमिति कोन कॉलेज लाइफ रे केते परसेंट मार्क रखिथिलो केबे कॉलेज रो टॉपर हेतिलो स्कूल रे टॉपर हेतिलो फर्स्ट प्राइज को डिबेट रे कोन पाइथिलो सेकंड प्राइज पाइथिलो these are few important events which you remember for your throughout the life which you have completed similarly history भी सेमिति आमे पढिबु it is the important event of the past that is and that must be chronologically arranged. Chronologically means what? Chronologically arranged. So if you elaborate it, chronologically means let's say assume करो तुम्हें जन्म हलो तापर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास 10th क्लास ई सीक्वेंसली अछि ना एवं सही सीक्वेंसली तुम्हें मन भी रखिछ सही सीक्वेंसली भी तुम्हें मन रखिछ ना नहीं सेम वे क्रोनोलॉजिकली जदि न होबो आमे हिस्ट्री को बुझी परिबा इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड सो सही थी पानी इट इज अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट ओके सो इट इज द सो हिस्ट्री डेफिनेशन देखिबा it is the chronological study of important event of the past important event of the past clear यदि बार समझते क्लियर ओके सब बेले मन रखिथिबो हिस्ट्री इज ए क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ द पास्ट सो जदि आमे देखिबा हिस्ट्री एज सच हमर बुक्स रे आमे देखि जे एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न बट एंशिएंट पूर्वरु हमर ए डिवीजन पूर्वरु तीनटा डिवीजन थिला
गोटे है कौन ना प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री फेज. So prehistory माने here no script of any kind, no script of any kind is available, no script of any kind is available, and the evidence is archaeological evidence, archaeological evidence. The information we get is from archaeological sources. Only archaeological evidence only. No script of any kind is available. That means no literary sources is available. Similarly, proto-historic phases. That means script is available. Script is available, but not yet deciphered. Deciphered माने हमें डिकोड करि पानु जानिनु कोन लेखा है. This prehistoric age is called Stone Age, and this age is called Indus Valley Civilization or Harappan. Exact जदि कहबा, this is popularly called Indus Valley Civilization. In true nature it is Harappan civilization. Script is available but not yet deciphered. Clear? Then basically pictographic script. Similarly, historic phases माने script is available. Script is available. Script is available. Also deciphered and deciphered. So deciphered भी है आम पाखे स्क्रिप्ट अवेलेबल भी अच्छी. क्लियर? एति पर्यंत समस्त क्लियर हेलो. So this historic phases आमे तीनटा पार्ट रे डिवाइड कर दीचु. गोटेला एंशिएंट बेसिकली कौन ना ये सब मिसे की स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अप टू 1200, then medieval and modern. ये तीनटा देन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मध्य एई बढिया तुमर तीनटा चारटा पार्ट रे डिवीजन अछि. India after independence. Okay. So why study history? आमे काहे की हिस्ट्री पढ़ू? Very simple questions. To know the past, so that we can use in the future.
so that we can use in present and future, right? यूज करियो जेमती गोटे छोटिया एग्जांपल देबी जदी समस्त जानि थिबो सूरत स्प्लिट हेतिला सूरत स्प्लिट रे कोन हेतिला ना 1907 रे बुझी पार नथिले माने ब्रिटिश रो इंटेंशन जतले ब्रिटिश माने दी जन को बेसिकली लड़े की गोटे कांग्रेस भीतर गोटे ब्रेक हो जाता एक्सट्रीमिस्ट आउ मॉडरेट से भाया 1920-22 पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट विड्रॉ करने गांधीजी से भाया सिचुएशन क्रिएट होता गोटे प्रो चेंजर नो चेंजर या स्वराजिस्ट आउ नो चेंजर भितर तो से भाया गोटे डिविजन क्रिएट हो जाता से माने लर्न करथिले पूर्वरु सेहि में ताकू यूटिलाइज करि परबे ओके सेहि में ताकू यूटिलाइज करि परले सो नेक्स्ट देखिबा क्रोनोलॉजी वेरी इंपोर्टेंट क्रोनोलॉजी सो क्रोनोलॉजी माने कोन बुझुछथि सीक्वेंशियल ऑर्डर है ना Chronology means sequential order. Sequential manner रे आपण पाइबे जेमिति आमे एंशिएंट हिस्ट्री पढिलु एंशिएंट हिस्ट्री पढिबु कोन पढिलु स्टोन एज देन इंडस वैली सिविलाइजेशन तार क्रोनोलॉजी देखिलु जदि आमे देखिबु वन बाय वन आमे देखिबु लेट्स से prehistory to 700 AD पर्यंत these are basically period basically believe करा जाए कि ancient age है ना ना सो एई समय रे देखिबो मनीष इंडियन सबकंटिनेंट रे 2.3 मिलियन ईयर एगो दैट मींस 20 लाख ईयर एगो इंडियन सबकंटिनेंट आस्तिला अराउंड 4.2 बिलियन इयर्स एगो अर्थ रे ह्यूमन आसीथिले बोली जणा पड़े या ह्यूमन लाइफ आसीथिला बोली जणा पड़े एवं अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग बिलीव करा जाय कि इथियोपिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका रे अवेलेबल अछि सेठी मिले बोली कह जाय एवं होमो सापियंस बेसिकली प्रेजेंट फॉर्म 70,000 बीसी रे हमें पढ़ पाइबे द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट माइट हैव बीन ट्राइबल जेमती नागास इन नॉर्थ ईस्ट Santals in East India, Bhils in Central India, Konds in Central India, and Todas in South India. ये सब पाई परिवे. So these people speak Austric, pre-Dravidian language like Munda, Gondvi. So Aryans and Dravidians are supposed to be immigrants who came later to subcontinent. ये द्राविडियंस वगैरह जोंडे कि प्रेजेंट हमें साउथ रे रहउचंदी आरियंस बेसिकली नॉर्थ इंडिया रे ये परे आसंती बट तांको पूर्वरु ए माने बेसिकली इनहेबिटेंट्स थिले ट्राइब्स लाइक नागास सांताल्स व्हील्स गोंड्स सेंट्रल इंडिया रे ये सब पाई परिबे क्लियर सो प्री हिस्ट्रिक फेजेस रे फर्स्ट फेज देखिया कोन ना पैलियोलिथिक पीरियड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 मिलियन BC टू 10,000 BC दैट इज 2 मिलियन माने 20 lakhs 2 मिलियन मींस 20 lakhs $20 lakhs. So important Paleolithic site देखिए कालाडकी बेसिन भीमबेटका होसंगी बेसिकली हुंसगी कुर्नूल केव एंड नर्मदा वैली एई एरिया रे बेसिकली अर्लीस्ट ह्यूमन अछंदी बोली बिलीव करा जाए से टूल्स मेड अप ऑफ लाइमस्टोन रे बनौथले एंड फायर वाज डिस्कवर्ड एई समय रे सो मेसोलिथिक पीरियड या परे 10,000 BC रु
8000 BC. So microlith, very small basically stone रे metal so पाइथिले बे stone रे stone tools से माने पाइथिले. So at ब्रह्मगिरी हौ नर्मदा गुजरात ये समय मिलता microliths, basically small पत्थर. Domestication of animals and cattle rearing were started in this period. Domestication of animal and cattle rearing are started in this period. Significant climatic change happened. एई समय एवं बिलीव करा जाए गोटे हॉट विंड्स भलिया बहिथिला सेइथि पई प्लेन एरिया रे रहिया पई गोटे सुइटेबल कंडीशन हला. अदरवाइज बेसिकली ठंडा बहुत थिला सेइ समय एते ठंडा थिला कि पृथ्वी रे मनुष्य भी ग्रोथ भी हो नथिला. तुमे देखो कि जो एरिया रे बसी ठंडा सेठी ह्यूमन रो ग्रोथ एते न थाए, राइट. सो ये सिचुएशन थिला. सो देन याको परे आसिले 10,000 BC रू 8,000 BC, देन 8,000 BC रू बेसिकली 2000 BC ये समय रे नियोलिथिक एज कहा जाए या अर्ली पास्टरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी. ये कम्युनिटी कोन ना समय व्हील रो डिस्कवर हला. बहुत रिमार्केबल डिस्कवरी इन दिस फेजेस. व्हील जगु आज दुनिया रे आज इलेक्ट्रिसिटी हो आज जहां भी किछि आपण ये सब व्हील जगु ही पाउची, नले घरे भी ही पार नथंदा व्हील जदी न थांता. सिमिलरली एग्रीकल्चर मध्य एई समय स्टार्ट हला सेति में कहा जाए अर्ली पास्टरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज. ओके, बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम सेटल्ड एग्रीकल्चर मनीष सेटल एग्रीकल्चर स्टार्ट कला. People started practicing settled agriculture. So major megalithic site are Brahmagiri, Adichanallur. So important Neolithic site देखिबा हल्लूर आंध्र प्रदेश, महागारा उत्तर प्रदेश, मास्की बुर्जहम कश्मीर, चिरांड बिहार, दियोजाली हाडिग त्रिपुरा एंड आसाम, गुफकारल कश्मीर, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश एंड मेहरगढ़ पाकिस्तान. दीज आर द मेजर नियोलिथिक साइट. एवं मेहरगढ़ जोटे कि अर्लीस्ट टाउन जी की डेवलप टाउन टी गाँव डेवलप टाउन आड़ को स्टार्ट हबारे ये मेहरगढ़ बेसिकली बेस थिला. तो ये फेजेस रे आपण माने क्रोनोलॉजिकली ये देखि परिबे. Then Indus Valley Civilization 2700 BC to 1900 BC. This is also this is mature phase. But in reality this is 3300 BC ରୁ टाउन स्टार्ट हो जाइथिला अप टू 750 BC पर्यंत. So this was established around 3300 BC. जने कहउथली एंड फ्लोरिश्ड बिटवीन 2700 एई सब हला पीक स्टेजेस माने बेसिकली इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कोन फर्स्ट अर्बन फेजेस, फर्स्ट अर्बन लाइफ या फर्स्ट टाउन्स एंड सिटीज इंडिया रे देखाई दिला. फर्स्ट टाउन्स एंड सिटीज फर्स्ट टाइम देखिबो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे. Okay, so this is established around 3300, then flourish hela dhire dhire disappear hela around 1400 BC, but it started declining around 1900 BC. peak stage ru decline hoba start hela. Then ei समय रा आउ गोटे फेजेस थिला जोने कि चाल्कोलिथिक एज कहा जाए. काहे कि चाल्कोलिथिक एज कहा जाए काहे ना एई समय कॉपर डिस्कवरी हेतिला. दैट इज चाल्को माने कॉपर, लिथिक माने स्टोन. So copper stone age कहा जाता. That is stone यूज होतला. But first metal जोटा कि माने मनुष्य डिस्कवर करला इन इंडिया रे सी हैला कॉपर.
It is also known as Copper Age or considered part of Bronze Age. याकू भी मध्य कुआ जाए Copper Age, Chalcolithic Age और Bronze Age. So then देखिबा chronology खाली देखुचा हमें या डिटेल्स पढुने हमें आगु को पढिबा आयरन अराउंड आयरन डिस्कवरी हला एवं एई पीरियड को वैदिक पीरियड कुआ जाए एवं अराइवल ऑफ आर्यंस मध्य एई समय देखा जाइथिला. So basic books of Hinduism एई समय डेवलप हितला जोंडे कि वेदा is composed during this phase and this is the world's earliest religious text जोंडे कि हमें वेदा नाम रे नामित एवं एई वैदिक एज परे वैदिक एज बेसिकली वैदिक एज 1500 BC रु 600 BC एटा हला वैदिक एज. देन ता परे आसिला कोन 600 रे rise of Buddhism and Jainism. Rise of Buddhism and Jainism. And आउ गोटे एठी बहुत सारा डेवलपमेंट हैला कि 16 महाजनपदस and rise of Magadha. And out of this Magadha 16 mahajanapadas, Magadha emerged as a largest empire and it becomes Mauryan empire after Maurya came to power. Maurya came to power, Magadha empire started by Bimbisara, but so Sisunaga dynasty, Kala Ashoka, जोंडे कि काका वर्णिन, Bimbisara of Haryanka, Kula, Magadha empire, Nanda empire, Mahapadmananda, Nanda, Dhanananda, and Persians, basically Greek arrival, Alexander 327 BC. So then देखिए Mauryan empire जोंडे कि मु कहितली सेई मगधरु राइज हला नंदा, नंदा परे धनानंद लास्ट रूलर, धनानंदा परे basically राइज हला Chandragupta Maurya, and this phases is Mauryan phases and greatest ruler of Mauryan phases is Ashoka. Okay. Sunga dynasty, Mauryan dynasty तापरे जोंटा कि पोस्ट मौर्यन फेजेस आमे कहू, आमे पोस्ट मौर्यन फेजेस कहू, पोस्ट मौर्यन फेजेस जो थे सुंगा, कानवा, सातवाहना, इंडोग्रीक्स, पार्थियंस, साका एरा स्टार्ट होता एंड कुशानास. दीज आर बेसिकली तुम्हारा पोस्ट मौर्यन फेजेस वैसे मौर्यन परे एवं दिस फेजेस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फेजेस. तुम देखिबो फॉरेन इन्वेजन एई समय हेइथिला एवं फॉरेन इन्वेजन जुगु बेसिकली इंडिया रो बेसिकली बहुत सारा स्कूल ऑफ आर्ट स्कल्पचर डेवलप हेइथिला. देन सही समय साउथ इंडिया रे बेसिकली संगम एज 300 BC रु 300 AD जो थे चोला, चेरा, पांड्या बेसिकली तुम संपाट आंध्र प्रदेश तेलंगाना सॉरी आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो रहा से समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग नाला. सो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला है ना, तो ये सब थिले बेसिकली. तो चेरा बेसिकली केरला रु थिला, ये पांड्या तमिलनाडु एंड ये आंध्र प्रदेश. गुप्ता एम्पायर 300 AD रु बेसिकली देखिबो 600 AD, बट तापर पोस्ट गुप्ता भी मध्य एठी पाइबो. पोस्ट गुप्ता भी या भितर आसीबो जोंटा कि हर्ष वगैरह ये सब पाइबो. So this was an ancient Indian empire. Samudragupta was the Gupta empire is known as a Indian Napoleon. जानिचे समझते. This is very important. तुम्हारा देखो ये जो क्रोनोलॉजी माइंड रखी दबो ना यू विल एंजॉय. देखो या पर या थिला तो मते मजा लागिवो. तो सही जिनस को तुमको रखिबार अछि माइंड रे मजा लागिया पई. सो पोस्ट गुप्ता और कंटेम्पररी गुप्ता जोटा कि गुप्ता एम्पायर परे वर्धन
डायनेस्टी जोटा कि हर्षवर्धन डायनेस्टी, मौखारी डायनेस्टी, होना, पुष्यभिप्ति, ये मौखारी हर्षवर्धन वर्धन ये सब गोटे बेसिकली अलग अलग थे, सब गोटे हर्षवर्धन समय हो होना इनवेजन से सब होता, गौड़ गौड़ देन बर्मन मैत्रिका ये सब थिले। ऑल्सो राजपूत सेना एंड चौहान सक्सीडेड लेटर। ये सब माइंड रो प्रिंट कर दियो सो दैट आम आगु को पढ़ा तुमको इजी हम पढ़ा। देन मेडिएवल इंडिया, ओके 700-800 पर मेडिएवल इंडिया पाइबे। देखो क्रोनोलॉजी जो ये गुड़ा अच्छी आपनकर ईयर गुड़ा एक्जाक्टली सेम बेसिकली एप्रोक्सीमेटली गुड़ा सब नियाई, बट तुम पाखे गोटे पिक्चर रहा कि ओके या पर या होता या पर या होता गोटे पिक्चर रहिबो। मेडिएवल इंडिया 700 to 1857 AD। ये जो देखियो 1857 माने रिवॉल्ट 1857 कथा कहउची, रिवॉल्ट 1857। सो एई समय रे 700 टू 800 एई समय रे इंडिया बेसिकली ट्राई पार्टी स्ट्रगल माने तीनटा पार्टी जोटा कि राष्ट्रकूटा गुर्जार प्रतिहारस एंड पाला, ये तीन जन सबुळे लड़ाई लागि थांती फॉर सेंटर कन्नौज को कैप्चर करने, यहाँ को स्ट्राई पार्टी स्ट्रगल कह जाए। पाखापाखि 304 से माने कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर किए गंगाटिक वैली या कन्नौज जोटा कि सेंटर थिला, जमते हर्षवर्धन समय कन्नौज कैपिटल थिला, या हर्षवर्धन परे परे ये भाया स्टार्ट होती कि किए कन्नौज या गंगा वैली को ता कंट्रोल नब, कहीं हिस्ट्रिकली देखाई जी गंडा गंगा सी सबुठु पावरफुल होइछि। इन 712 AD, attack of Muhammad bin Qasim, growth of Sufism, and succeeded by Muhammad of Ghazni 1027, then Muhammad of Ghori basically 75-1206, the major South Indian kingdom during medieval are Vijayanagar and Bahamani. These are very important, तुम्हारो ये भी आमे देखिबा साउथ इंडिया, बोथ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया दीटा देखियो। दिल्ली सुल्तान 1206 रु 1526 एडी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सायदी डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, ये पूरा दिल्ली सुल्तान बेसिकली 1206 रु 1526 एंड 1526 रु देखिए यदि 1857 पर्यंत तो थे मुगल, बट 1707 पर ये लेटर मुगल से जाइए बेसिकली डिक्लाइनिंग स्टेज रे थिला, एई समय केमति किछि डेवलपमेंट नथिला। सो मुगल्स, लेटर मुगल्स एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन 1498 यूरोपियन अराइव करथिले, जोटा कि इवन मुगल आसिया पूर्व यूरोप माने इंडिया को आसी जाइथिले। सो देन मॉडर्न इंडिया फॉर 1857 पाखरु आपण माने सब देखि परिबे मॉडर्न इंडिया रो। सो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1885 formation of Indian National Congress, 1906 formation of Muslim League, and 1920 non-cooperation movement, and is a major event civil disobedience movement, 1942 quit India movement, 1947 partition of India, 1946 जोटा कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पर्यंत तुम माइंड रो जदी पिक्चर बनैबो, चिंता कर आमे कोठु जाईकी कोठु पूरा क्रोनोलॉजी देखिके आसिले, एवं एई क्रोनोलॉजी तुमको हिस्ट्री पढ़िबारे बहुत ही हेल्प करिवो। सो ट्राई करो कि क्रोनोलॉजी अनुसार
सो दीज पीपल स्पीक ऑस्ट्रिक. सो ये सब आमे क्रोनोलॉजी 1 by 1 आमे देखिदेलु. दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुमर पार्ट. सो गोटे माइंड रो तुम गोटे पिक्चर होइला कि एंशिएंट टाइम रु कौन कौन थिला कौन कौन नाही. यू विल एंजॉय. तुम्हें रिमेंबर करिया ट्राई करो, एटा मन रखियो ट्राई करो. तुमको हिस्ट्री अधा पाठ एठी हेइयो. देन जेमती पढिथुओ एजेंट जेमती पढ़ापढ़ी करथुओ से अनुसार तुमर काम हेइजिवो. ओके. सो सोर्सेस कौन कौन सोर्सेस पाइले आम इनफॉरमेशन पाइले एविडेंस कौन पाइले इनफॉरमेशन अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री. सो मटेरियल रिमेन्स कौन थिला. सो देखिवा रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रैंड स्टोन टेम्पल्स ऑफ साउथर्न इंडिया, brick monastery of eastern India, vertical and horizontal excavation of mounds, megaliths in South India. ये सब गोटे बहुत बड़ा एविडेंस हमको देछि. सिमिलरली almost every aspect of lifestyle like use of pottery type, house construction, design, agriculture जोटे कि grains produced, animal domesticated, type of tools, weapons etc. and burial practice of time and geography. Then vertical excavation जोटे कि provides chronological sequence of material culture. Horizontal excavation रे जोटे कि complete idea about the particular culture. So ये सब excavation भी very important. vertical माने तळु खुली खुली गले माने जणे को ऊपर जणे दाबी कि अछि ना तो खुली खुली देखिले ताको पाई जिबा हमें इन्फॉर्मेशन पाई जिबा कि या पूर्वरु के थिला. ओके को भलिया से माने रहउथिले. हॉरिजॉन्टली कोन बेसिकली पर्टिकुलर कल्चर सेही माने ऊपर ऊपर खुली की जोटा कि गले. देन कॉइन रो भी मध्य जेमिति स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड numismatics. Coin excavated, collected from the surface and catalogued in various museum throughout the country and outside. So coin रू कोन बहुत सारा मूर्ति देखिले को गॉड से माने पूजा करथिले को ना तांगर थिला को लैंग्वेज यूज करथिले को भलिया मेटल यूज करथिले कॉइन रे केते अमाउंट ऑफ कॉइन मिलुथिला गोल्ड यूज करथिले या कॉपर यूज करथिले तो सिल्वर यूज करथिले को भलिया मेटल से माने करथिले केते हाई क्वालिटी रो मेटल थिला. सो एक्सकवेशन रो ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल प्ले करे. चाहे इंस्क्रिप्शन हो चाहे कॉइन हो, these are very important source of information. Not many symbols used in earliest coin. Names of the king or Ishwar, guilds and merchants, gods or dates are mentioned in coin from later periods. Help in construction of religious, cultural and economic history with chronology. Local and cross-border transaction that used these coins tells us about various ruling dynasties and extent of their rule. And number of basically coins indicates the level of trade, commerce and basically wealth in the kingdom. Only a few coins belongs to post-gupta times indicates the decline of trade and commerce. So Gupta धीरे धीरे सब मेटल को ट्रेड भी होता बेसिकली कॉइन थ्रू रे यूज होता. तो ये बहुत सारा इनफॉरमेशन आमे कॉइन माध्यम रे जोंडा कि पाइचु. Similarly, inscription it is very important. The study of inscription is called epigraphy. Epigraphy is a study of inscription. Similarly, paleography is a study of old writing on inscription on other records. So inscription carved on seals हो, seal रे inscription हो, stone रे हो, pillar रे हो, rock रे हो, copper plates रे हो, टेम्पल वॉल रे हो या ब्रिक्स रे हो और इमेजेस. सो अर्लीस्ट जो थिला प्राकृत रे थिला जोंडे कि अशोका समय लेटर इन संस्कृत एंड फर्दर लेटर इन द रीजनल लैंग्वेज को स्प्रेड हला. सो हरप्पन समय आमे जो स्क्रिप्ट देखिथिले इनस्क्रिप्शन सेटा हला पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थिला जोंडे कि ऑलरेडी आमे एपर सॉरी जोंडे कि टिल नाउ आमे डेसिफर करि परिनु आमे डिकोड करि परिनु. इन साउथ इंडिया इनस्क्रिप्शन ऑन टेम्पल वॉल रे देखि लिखा हितला. inscription जोंडे कि various information like royal order, like decision regarding social, religious. अशोका inscription बहुत सारा information मिली केमती welfare state करथिले केमती से कहिथिले कलिंगा वार विषय से मेंशन करथिले 13 मेजर ऑकरिक्स. सो ये सब जिंस ऑफिशियल्स कोन थिले पीपल को कोन जगह रो कोन पठौथिले ये सब मेंशन करथिले. सो अशोका inscription जोंडे कि स्क्रिप्ट यूज होइथिला ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खारस्ती स्क्रिप्ट, लैंग्वेज कोन से माने जानिथिले आमे सेटा भी information
पाइलु डोनेशन लैंड ग्रांट्स एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द किंग कंकर कोन का हरेले जेमती हम देखिले समुद्रगुप्ता पुलकेशिन सेकंड विषय या हर्षवर्धन पुलकेशिन जानिथिले तथा सेही सब इन्फॉर्मेशन आमे एठू पाइथिलु सिमिलरली लिटरेरी सोर्सेस बहुत परे आसिला बेसिकली फ्रॉम Vedic age onwards we have a literary sources for Veda basically Ramayana Mahabharata Smritis and Dharma Sutras epics Jaina and Buddhist texts poetry Sango literature and plays etc. Tell us about the social, cultural and political condition of ancient times. In India, oldest manuscripts were written on birch bark, palm leaves. Kautilya Arthashastra gives exhaustive coverage of affairs that concern a king and his economy, polity, administration, society at large. So बहुत सारे information कौटिल्य एबे भी आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी ऑप्शनल पिला तुम देखिबो कि कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन सप्तांग जोटा कि थियोरी ये सब इनफॉरमेशन आम से पाचु सो दीज आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर स्टडी जमी पुराण रू डायनेस्टी हिस्ट्री विषय इनफॉरमेशन आसी सो दीज गुप्ता रूल विषय आम जान पुराण रू इनफॉरमेशन पाइले लैंग्वेज कौन कौन यूज होइले कौन भाया लिखुले से स्टाइल ऑफ राइटिंग तो दीज आर ऑल इनफॉरमेशन पाइलु आउ किछि फॉरेन अकाउंट्स जमते कि ग्रीक्स फिलोसोफर आसेला रोमान्स है चाइनीज हुएनसांग वगैरह डिप्लोमेट्स पिलग्रिम्स एटसेट्रा ये सब आसिले माने भी किछि देले अलेक्जेंडर किछि इनफॉरमेशन देले मेगास्थनीस इंडिका रे कहिले ट्रेड इम्बैलेंस विषय कहितले इंडिया और रोमन एम्पायर विषय देन नेचुरलिस्ट जोंटे कि प्लिनीस लिखिथिले द नेचुरलिस्ट सेइथरे भी इनफॉरमेशन माइले दिस ट्रैवलर वर वेलकम्ड बाय द किंग एंड से किसी ये विषय नॉलेज को लिखी रिलीजियस आइडियाज वगैरह ये सब लिखी सो दीज आर बेसिकली ऑल chronological order and sources of information we got collected from the so I hope very important sources very important this is the first chapter perhaps no questions came from this chapter but it will give you a base or building blocks for your future study. So this is part is must जोटे कि आमे देखिबा या आगु को स्टोन एज को कौन कहा जाए प्री-हिस्ट्रिक पीरियड the history has been classified as a pre-history proto-history and history. Pre-history is the study of beginnings and development of human society prior to the invention of writing system. It is also called the stone age because only stone use होता है. Why it is called stone age? Because it is the only tools used by the human कौन से stone. So stone tools use करते मनीष. तो सेही पाई ताको stone age कहा जाए. Then proto history basically मु कहि सारथिली ये proto history phase कहा होतला. Pre history, proto history and historic phases मु जेटा सब कहि देछि. Okay, then stone age, bronze age, iron age ये भी हमें discussion करी सारीचु. Okay, so about 4.2 million years ago human evolve हैला 4.2 million year ago 42 lakhs कहि पारो या 4.2 million year ago human being evolved and present form achieved only 50,000 year ago. Present form आमे जोटा कि present human form ये मात्र 50,000 वर्ष पूर्व या पूर्व बहुत सारा फॉर्म थिला चाहे गिबन ओरांगुटान गोरिल्ला चिंपांजी ये सब बहुत सारा फॉर्म रे थिले. So fossil found in Africa, China, Java, Sumatra and southern Europe portray the various stages and periods of human development. आमे देखिचु माने पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रे बहुत सारा जगह बट आमे अफ्रिका जो फॉसिल पाइलु ता सहित इंडिया सहित भी बहुत सारा सिमिलरिटी अछि आमे देखिलु. In India only humanoid fossil found is Hathnora in the Narmada Valley आमे पाइथिलु. So आमे जे देखियो Palaeolithic age यदि टाइम पीरियड देखिबा 2.6 million to 10,000 BC. Paleo माने old. Paleo means old. Lithic means stone.
ओल्ड स्टोन एज ओके एटा को पैलियोलिथिक कहा जाए बेसिकली 2.6 मिलियन टू 2 मिलियन बीसी पर्यंत दैट इज 2 lakhs बेसिकली 0.2 मिलियन बीसी मिडिल पैलियोलिथिक जोटा कि 2 lakhs रु 40,000 बीसी एंड अपर पैलियोलिथिक 40,000 रु 10,000 बीसी सिमिलरली मेजोलिथिक एज देखियो 10,000 रु 6,000 बीसी या 8,000 बीसी कहा जाए एंड नियोलिथिक है 6,000 रु 2,500 बीसी नियोलिथिक माने अर्ली pastoral agriculture community early pastoral agriculture community माने the people started practicing agriculture the people started living in settled type of life so that is sedentary life started that doesn't settled life started during this period okay so paleolithic age of prehistoric period mu kahithili prehistoric period so this term paleo means old stone age prehistoric period because it derives the Greek word paleos ame already discussion kari sarichu so in India no human fossil have been found associated with stone age tools however geological dating provides some insight into the antiquity of the tools when assessing the evidence of early human settlement in India it is observed that later than the African region but contemporaries with the other Asian countries. So ये सब बेसिकली किसी सेटलमेंट थिला जोंडे कि पैलियोलिथिक एज रे देन नियोलिथिक एज मेजोलिथिक बहुत पाइबो पैलियोलिथिक रे केवल विम्बेटका बरा वगैरह ये एरिया रो किछि हमर इंफॉर्मेशन पाइथिला so different of the type of technology tools used economic activity and cultural feature paleolithic age madhya तीन प्रकार डिवाइड करा जोडा lower paleolithic middle paleolithic upper paleolithic lower paleolithic middle paleolithic and upper paleolithic So lower Paleolithic age. The earliest use of stone was started in the lower Paleolithic age by Homo habilis or Homo erectus. Basically, they are not able to stand properly. That is, ame bhaliya se nothre chari gudiya thile basically. People in this age are nomadic and depend only on the hunting and food together. Monkey bhaliya basically rothile. Middle Paleolithic kana बेसिकली धीरे धीरे यहाँ डेवलप है इवोल्यूशन है मॉडर्न लैंग्वेज हो देन सिस्टमेटिक बुरियल एंड डेड विथ रिचुअल्स एंड यूज ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स दिस एज विटनेस ए वेराइटी ऑफ टूल्स मेड अप ऑफ फ्लैक्स हो फ्लैक्स बने निआर पड़ी प्रोड्यूस्ड बाय देयरफॉर इट इज वाइडली रेफर्ड टू एज फ्लैग टूल इंडस्ट्री यही समय मिडिल पैलियोलिथिक एज कथा कह जाउथि देन upper Paleolithic जोंटे कि आमो पाखकु तोडा Neolithic age पाखकु आसी this phases when modern men that is Homo sapiens first emerged around 50,000 years ei age re developed new tools making techniques in the form of blade and burin upper Paleolithic culture flourished in the upper Pleistocene often referred to as the late Pleistocene along with flag and core tools the upper Paleolithic industries produced side scraper wet scraper ये सब so this जब देखियो scraper गुड़ा ये गुड़ा scraper गुड़ा ये सब side scraper ये scraper different type of scraper ये समरे बनाई थला upper Paleolithic माने Mesolithic रो पाखापाखी एरिया Mesolithic आपन को पाखापाखी एरिया आसीगला सो लोअर पैलियोलिथिक एज देखिबा tools these stones were used as a chopping tools like hand axe cleaver knives basically and chopping large pebbles flakes और ये chopping करिया पे माने काटिया कोटा कोटी करिया पे ये सब बहुत भलो डेवलपमेंट हला एवं तार जुगो ही बेसिकली माइक्रोलिथ आसिला डेवलपमेंट हला तुमरो नेक्स्ट टूल्स पर मेजोलिथिक एज रे माइक्रोलिथ डेवलप हैला
different tradition माने according to tools. Okay, middle Paleolithic age. Middle Paleolithic age is a culture in India is called Navasian or similar to the Mousterian. As flex tools were found at a Pravara, Nevasha, and tools of flex production. Flex that are produced by striking them out of the pebbles and cobbles are used to make tools. Basically, माडिले तार जो भितर पार्ट रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट एवं ताकू ही बेसिकली यूज करा जाउ थाए. देन टूल साइज स्मॉल एंड मीडियम साइज हैंड एक्स क्लीवर स्क्रैपर ये सब यूज करा था. नाइफ्स बेसिकली टिके डिफरेंट थिला. लार्ज बोरर्स एंड वेल्स बेसिकली खोलिया पे मध्य जिंस आनिले. वैरायटी ऑफ स्क्रैपर काटिया पे बहुत सारा स्क्रैपर आनिले एवं एनविल्स एंड हामर्स मध्य ई समय मिलिथिला. हामर्स माने जानिचो ये करिया कुटिवा. देन दिद्वाना एंड बुद्धा पोसकर राजस्थान and Hiran Valley in Gujarat and Patwar Plateau between Indus and Jhelum and Sangau caves in northwest frontier province of Pakistan. ये सब sites थिला. ये Luni river system मध्य ये देखला. चिरकी नवेसा in Maharashtra and Kalpi in Uttar Pradesh मध्य ये समय देखा थिला. Paleolithic sites basically during middle Paleolithic. Middle Paleolithic परे upper Paleolithic tools जो देखिवा सेम टिके इम्प्रूवमेंट होता. किसी जगह बोन टूल्स भी मध्य यूज करते मध्य एक्सेप्ट कुर्नूल केव इन आंध्र प्रदेश आर नॉट फाउंड इन इंडिया. बाकी Baghor in Madhya Pradesh, Pairsa in Bihar, and Horaira and Kowai Valley in Tripura, Kurnool and Muchota Samajo Gavi in basically Chintamanu Gavi in Andhra Pradesh. ये सब जगह आपण माने पाइबे. So Mesolithic, very important phases. This is the middle phases or this is the basically changing transitional phases. The Paleolithic and Neolithic that occurred around 10,000 BC and ended with the introduction of agriculture. Beginning of the Neolithic age it start हला. Basically ये transition phase कहीं के transition कहीं को आउची ना इस समय पानी वर्षा माने हवा चेंज हला गरम हला वर्षा हला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हला ये सब धीरे धीरे चेंज. Climate this phase is variable length. This phase is of variable length depending on the climate factor like rising temperature, warm and dry climate ये समय देखा गला and impact on human life and fauna ऊपर मध्य impact देखा गला धीरे धीरे. Then economy कौन सेम hunting gathering रे से माने बंचु थांती है ना. किसी changes अच्छी कौन ना से माने microlith small माने metal यूज करिया को लागिले एरो बो ये सब से माने यूज करिया को लागिले. Long interaction with nature made them hunter and gatherer for specific species. Thus, they favor a few species of animal and plants over others. तो ये सब तुम्हारे मेजोलिथिक साइट में देखो भीमबेटका बेसिकली पेलियोलिथिक साइट टू कंटिन्यूअसली नियोलिथिक साइट पर्यंत भीमबेटका तुम्हें पाई पारिबो. So tools microliths are the distinctive feature of this age जोटा कि very important do remember. So microlith the larger tools are also used. खाली microlith न but microlith यही समय microlith माने small metal. ट्रापिजॉइड ट्रायंगल ज्योमेट्रिक मध्य से माने क्रिसेंट भलिया ये भलिया मेटल मध्य यूज करियो स्टार्ट करले से माने ज्योमेट्रिक नॉलेज मध्य से मानकर थिला. ये देखो माइक्रोलिथ वेरी स्मॉल मेटल्स से माने यूज करथले. सो साइट्स कोठी तिलवारा बागोर गणेश्वर इन राजस्थान, लांगनाज अखाज वालसना हिरपुर अमरापुर देवनीमरी धेकदोल and Tarsang in Gujarat, Patne, Pachad, Hatkamba in Maharashtra, then Markhana, Lekhaiya
बेघाईखोर, सराय नहर ये सब उत्तर प्रदेश, दमदमा, महादहा, पचमारी, आदमगढ़, पुतली, भेम्बेटका, बागोर ये सब बेसिकली मध्य प्रदेश, पर्सिया, बिहार, पैसरा ये सब कुचाई उड़ीसा रे, बीरभानुपुर वेस्ट बेंगल ये सब में ये सब जगह पाइबो। So Neolithic age of prehistoric period. This new stone age developed in Holocene epoch, preceded by the Mesolithic age. This prehistoric period was characterized by the development of agriculture, pottery, permanent settlement. Thus, the beginning of the first human civilization, often termed as Neolithic revolution. सेइथिपाई एटा को very important pottery, agriculture and settlement and wheel ये तीनटा जिनस जोटा कि ह्यूमन इवोल्यूशन रो रिवोल्यूशन सेइथिपाई को आजे केते केते नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नियोलिथिक रिवोल्यूशन ओके ये सब से माने कोन ना या पूर्व कोन होता है पैलियोलिथिक मेसोलिथिक हंटिंग एंड गैदरिंग करथांती बट नियोलिथिक एज रे ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्रोड्यूस फूड and for the first time agriculture and domestication of animals were the two novel practice that developed at this time. Some wild animal species like goats, sheep, cattle were domesticated which were being used for transportation and in agriculture madhya use kara jay. Similar to this early crops included wild variety of paddy essentially especially Asia, wheat, barley, etc. Agriculture proved to be such a significant invention that a small portion of society was able to provide the entire community with. So, Neolithic pottery was pioneering in made of hand first, and then wheel madhyamare then wheel hela. पूर्व हाथ करते इनिशियली देन धीरे धीरे व्हील तो ये बहुत बड़ डेवलपमेंट बहुत बड़ इमेजिन कर बिना व्हील रे मनुष्य केमिति बंचिबो यू कैन नॉट सर्वाइव। Weaving and spinning are also invented in this age. Neolithic age opened the entirely new way of life and sowed the seed for civilization. माने Indus Valley civilization माने Harappan civilization पाई गोटे मंजी बुनिला if there was no Neolithic age. Perhaps there was no Indus Valley civilization. So always culture, always in agriculture, always agriculture surplus leads to industrialization or urbanization. First Neolithic culture is said to have started in the fertile crescent of West Asia, North Africa, वाना को जाउथला region included Mesopotamia, Iraq, Syria, Libya. This period witnessed the development of pottery, polished stone, tools and permanent settlement. ये सब देखा। So Neolithic culture जे देखिवा there are three nuclear region जोंडे की कश्मीर वैली, विंध्या गंगा वैली एंड कर्नाटका। विंध्या गंगा वैली जोंडे की चुपानीमेंडा, बेलान, कोल्डी हवा एंड महागरगरा एंड इंद्री ये सब गोटे रीजन थिला। कश्मीर वैली बुर्जहम, बेड़ाताल, बेगागोंड, गुफकाराल एंड पामपुर these are all part then Deccan region भी ये सब थिला। फोर्थ रीजन देखिए पेरिफेरल साइड बिहार झारखंड ये सब रीजन रे पाया। देन मेनली नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक फेज। चाल्कोलिथिक बेसिकली कॉपर डिस्कवर अराउंड 4000 बीसी। चिरांड जोंटे की द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट मध्य ये समय थिले। सो एग्रीकल्चर वेरी इंपोर्टेंट थिला। टूल्स, पॉटरी ये तीनटा एंड टूल्स रे बेसिकली व्हील माइक्रोलिथ थिला व्हील डिस्कवरी पॉटरी जो हला एंड टूल्स एंड वेपन जो देखिबा पीपल माइक्रोलिथ जो मेसोलिथिक पीरियड थिला सेटा को भी यूज करूचंती बट व्हील एवं बाकी आउरी रिफाइंड फॉर्म नीडल, स्क्रैपर, बोरर ये सब। हाउस एंड सेटल लाइफ जदी सेटल लाइफ माने हाउस स्टार्ट हला, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट हला जोंडे की सेमी प्रीशियस स्टोन रे बीड्स बनेले, एनिमल्स एंड मदर गॉडेसेस आर ये सब मध्य मिलिला ये सब नियोलिथिक एज रे। सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक जोंडे की बेलान वैली हो, बुर्जहम कश्मीर, बेलान वैली जोंडे की विंध्या और नर्मदा वैली मझिरे, देन गुफकाराल कश्मीर रे, कोल्डी हवा एंड महागरा जोंडे की अलाहाबाद पाखापाखि एरिया,
मेहरगढ़ बालूचिस्तान पाकिस्तान, चिरांड बिहार रे, पिकलीहाल ब्रह्मगिरी मास्की एंड तक्कलाकोटा एंड हलूर कर्नाटक, ऑल इन कर्नाटक, ये सब तुमरो नियोलिथिक एज। ओके ओके देन देखिबा चाल्कोलिथिक एज और स्टोन एज। The Stone Age metal tools began to be used together for the first time during the Chalcolithic age, है ना। माने स्टोन एंड मेटल दीटा को यूज टुगेदर यूज करा गला। फर्स्ट मेटल यूटिलाइज जोंडे कि कॉपर चाल्कोलिथिक पीरियड जनरली कंसीडर्ड टू बी द प्री हरप्पन पीरियड। तो सेथि पई बिलीव करे 3500 रु 4000 बीसी भितरे ए माने ये हेतिले। देखो ये सही समय कल्चर हेतिला आहार कल्चर, कायथा कल्चर, जोंडे कि जोधपुर कल्चर हो, ओक्री कलर पटरी इसमें देखा है जरुई कल्चर। ओके ये नियोलिथिक कल्चर देखो। ओके सो ये सब चाल्कोलिथिक कल्चर एपटे ईस्टर्न इंडिया भी मध्य देखा है आउ नियोलिथिक कल्चर। चाल्कोलिथिक बेसिकली कॉपर स्मिथ माने थिबे, कॉपर एक्सपर्ट थिबे चाल्कोलिथिक। दे न्यू आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग केमती होची, है ना। स्टोन वर्कर वर्शिप स्मॉल के इमेज ऑफ अर्थ गॉडेसेस से माने यूज करथिले। पटरी वेरी इंपोर्टेंट, पटरी रो वाइड यूज एई समय मध्य हेतिला। ब्लैक एंड रेड पटरी से माने मोस्टली यूज करथिले। एंड रूरल सेटलमेंट, यस कल्चर माने रूरल सेटलमेंट, बेसिकली पीपल लिव इन स्टोन एज रूरल सेटलमेंट। देन लाइव जोंडे कि थेटेड हाउस माने भी मध्य मड हाउस से ब्रिक्स हाउस रे से माने रहउथिले। एग्रीकल्चर कैटनरिया जेहेतु से माने रूरल एरिया रहउथिले, डेफिनेटली द पीपल आर स्टोन कॉपर यूज करथिले, बट गाँ गली रे रहउथिले। ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम ये सब चाष करथिले। कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लैक कॉटन सॉइल बीसीएस डेक्कन एरिया रे प्रोड्यूस हेतिला। ज्वेलरी देखिबा चाल्कोलिथिक पीपल ऑफ फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन। सो द वुमेन और ऑर्नामेंट्स सेल बोन एंड कैरेड फाइनली वर्क्ड क्लैम्स जोंडे कि कम भी से माने यूज करथिले। सो इंपोर्टेंट चाल्कोलिथिक कल्चर दे साइड देखिबा मालवा मध्य प्रदेश, कायथा कल्चर मध्य प्रदेश, आहार कल्चर बानस वैली साउथ ईस्टर्न और राजस्थान, गिलुंद बानस वैली राजस्थान, दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, सानगांव इनामगांव एंड नासिक महाराष्ट्र, नबदातली ऑन नर्मदा एंड नवासा जरुई एंड महाराष्ट्र, चिरांड शेन्नूर एंड सोनपुर बिहार एंड महिस्थल इन वेस्ट बंगाल। एंड दीज आर द साइट जोंडे कि हमें देखिबा चाल्कोलिथिक साइट्स। ओके सो दीज आर जो पार्ट हमें देखिले। नेक्स्ट हमें कौन देखिबा चाल्कोलिथिक परे इंडस वैली सिविलाइजेशन। Hi guys, so we have completed first part that is Stone Age. Up to Stone Age we have completed. Now we will start from questions regarding Stone Age. So questions is following period, which one of the following period is also known as Chalcolithic age? Which one of the following period is also known as Chalcolithic, also known as Chalcolithic age? Stone Age, New Stone Age, Copper Age and Iron Age. So correct answer is Copper. Copper Stone Age. Chalco means copper, lithic means stone. So Copper Stone Age कहा जाए या Copper Age मध्य कहा जाए. It is the transitional phases जोड़े क्या हमें देखे थे. Name of the site which has revealed the earliest evidence of settled life. धोलावीरा, काइल गुल मोहम्मद, कालीबंगन and मेहरगढ़. So which of the following site has revealed the earliest evidence of settled life? Earliest evidence of settled life. This is very important questions. Very important. So correct answer is D. मेहरगढ़. मेहरगढ़ अपन माने जानी थी वे बालूचिस्तान पाकिस्तान में पाइबे. बालूचिस्तान पाकिस्तान में पाइबे मेहरगढ़. So the earliest evidence of settled life
farming and domestication of animal are found in Mehergarh. It was around 7000 BC. In Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their house in the following orientation: north, south, east, west, south, north, west, east. कहले जल्दी कहले समझते. So correct answer is basically north south direction रे. So Maharashtra the dead were buried in the north south direction, while in South India it is east west direction. Okay, South India रे east west direction. Next देखिबा हमें Indus Valley civilization, Harappan civilization या Bronze Age civilization हमें देखिबा. जे देखिबा civilization, why it is called civilization, and culture. What is the difference between civilization and culture? Civilization is basically urban in nature, and culture is basically rural in nature. Okay, civilization is basically depends on culture. It depends on culture. Culture is basically the way of life. Civilization is depends on secondary and tertiary economy activity. Secondary and tertiary economy activity. Secondary and tertiary economic activities. It is depend on primary economic activity. Secondary and tertiary economic activity माने कौन? Secondary basically trade and commerce. Secondary economic activity. Arts and crafts. This is primary economic activity. This is tertiary economic activity. It is primary economy agriculture, fishery, forestry, ये सब आजकल primary economic activity. It is the culture which leads to urbanization, and culture, the refined form of culture is urbanization. Okay, so सेइथिपाई Indus Valley civilization is the first urban phase in the Indian subcontinent. We have a fourth phase of urbanization, and Indus Valley civilization was the first urban phases. So origin नहीं आसर बहुत सारा थियोरी अच्छी. किसी थियोरी अच्छी सडन ओरिजिन, किसी थियोरी अच्छी मेसोपोटामियन ओरिजिन, किसी थियोरी अच्छी आर्यन ओरिजिन, आउ किसी थियोरी अच्छी जोंटे की ग्रेजुअल ओरिजिन. ओके, जोंटे की लेटेस्ट सेटा ही बेसिकली मोर एक्यूरेट फॉर्म जोंटे की एज ऑफ नाउ सेटा को कराइची. सो हरप्पन किसी ओरिजिन वैदिक आर्यन कहिची. फॉरेन इन्फ्लुएंस जोंटे की माने मेसोपोटामियन, वेस्ट एशिया, माइग्रेट एसी आसी की से माने द्राविडियन language India रे कहले. देन origin of settlers of Indian basically indigenous origin माने basically एम घोष, एमआर मुगल ए माने सब ये देथिले कि धीरे धीरे मनुष्य कोन ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कला. मेहरगढ़ भलिया गां बड़ बड़ विलेज हैला. बड़ बड़ विलेज रु जेतले एग्रीकल्चर सरप्लस नीड्स टू कोन हैला ना ट्रेड एंड कॉमर्स and trade and commerce need to tertiary and secondary and basically tertiary economy activity रे convert हो गला जोंटे कि art and crafts को convert हो गला, and that's resulted in basically big towns like Mehergarh, Harappa ये सब formation होबा को लागिला. So Harappan civilization the first urban civilization of South Asia, जोंटे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्ट ऑलरेडी थिला, ये कंटेम्पोरारी बोली
बिलीव करा जाए। Of the three aforementioned civilization, Harappa civilization occupied most area, that is सबुठु अधिक एरिया Harappan civilization अंडर थिला। एंड किसी हिस्ट्रियन भाबुथांती कि कहीं कि ना इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया गला, कहीं कि किसी हिस्ट्रियन खास करके वेस्टर्न हिस्ट्रियन से माने भाबुथांती कि ये केवल इंडस रिवर एवं तार ट्रिब्यूटरी आखापाखी रे जनबसति हेची, बट इन रियलिटी घग्गर हो, हाकरा हो, सरस्वती ये सब रिवर सम पार्ट ऑफ गंगा मध्य ये settled ହେଇଛନ୍ତି। So Harappa is the first archaeological site to be discovered, therefore gives its name to the entire civilization. It forms a part of proto-history of India and belongs to the Bronze Age. So Bronze Age माने कौन भाबुछ कि ब्रॉन्ज माने यूज करिया सिखि जाइथिले। So Indus Valley civilization flourished around, called Bronze Age civilization or proto-historic civilization. Meso, also called Sumerian civilization, evolved in the river basin of Euphrates and Tigris river, which presently located in Iraq and Syria. Egyptian civilization evolved around Nile river valley and the longest river away, the Nile delta present day Egypt. And Chinese जोटा कि northern China रहीथिला around Huanghe river basin. So these are basically river area around हेथिला। एठी जानिछे इंडस आउ सरस्वती रिवर जोटा कि ये एरिया अंडर रे इंडिया रे जनबसति हेथिला। ये देखो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, टाइग्रिस यूफ्रेटिस मेसोपोटामियन, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती वैली एंड चाइना हुआंगहो सिविलाइजेशन ये एरिया रो पाइबो। से थ्री फेजेस रे डेवलपमेंट इज गुड अर्ली 3300 या 3200 टू 2600 BC, mature phase हला this 800 years पाखापाखि 700 years, and हरप्पन later phases हला 1900 ରୁ 1300 basically 750 आडको ये सरी जाइछि। So this is the three phases basically। जदि अर्ली phases देखिबा जोंडे कि किछि अर्ली साइट हला पादरी, गुजरात, कालीबांगान, राजस्थान, धोलावीरा, हरप्पा, बालाकोट, आमरी, बिरहाना, कोटदीजी एंड गुमला। These are early phases. Mature phases रे सब आसिला कोन occupied the area of 8 lakh square kilometer, मांडा जॉइंट के सुटका गेंडूर बालूचिस्तान, मालवान गुजरात, आलमगीरपुर यूपी ये छड़िया बेसिकली नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ये भले तार एक्सटेंड थिला। एंड डिक्लाइनिंग फेजेस कोन मोर नंबर बट स्मॉलर इन साइज थिला, डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। ओके सो ये थिला इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तुमरो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये एरिया को बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन थिला। दिस आर द मैच्योर फेजेस। ये आपण माने देखि परिबे सबु। दिस आर वेरी इंपोर्टेंट माइंड रो रहिबा केमिति धीरे धीरे वन बाय वन फेजेस डेवलपमेंट हेजी टुवर्ड्स ईस्ट आड़ को आपण माने को देखि परिबे जाइछि। इनिशियली ए फेजेस थिला, देन धीरे धीरे एपट को आसिला। ओके देन धीरे धीरे एपट को आसिला एंड ता परे देखंतो आहुरी एपट को आसिया को लागिला। सो हरप्पा सिविलाइजेशन एक्सटेंट हमें ऑलरेडी देखि सालोनी। नॉर्थ रे मांडा जे&के, मेलवान इन साउथ गुजरात, सुटका गेंडूर बालूचिस्तान, वेस्ट एंड ईस्ट आलमगीरपुर यूपी ये चारिटा जगह तार एक्सटेंटेड। About 1400 settlement of the Harappan culture are known from the different part of India. About 925 settlements sites are now in India and 475 are in Pakistan. The total geographical stretch of Harappan civilization is about 1250,000 square kilometer, which is more than 20 times of the area of Egyptian and more than 12 times of the combined area of Egyptian and Mesopotamian. So this is very very important facts you need to remember, very very important really.
So settlements belong to the civilization can be classified into small villages which are up to 10 hectare, larger towns and small cities 10 to 50 hectares. Large city settlements such as Mohenjo-daro 250 hectares, Harappa 150 plus hectares, Ganwariwala 50 plus hectares, Rakhigadi 80 plus hectares, Kalibangan 100 plus hectares and Dholavira 100 plus hectare. गोटे देखो साइट तार सेटलमेंट एरिया देखो बिग बिग मोहेंजोदारो सबुठू बड़ एरिया देन हरप्पा राखीगढ़ी एबे रिसेंटली मिली जोटा कि सबुठू लार्जेस्ट एरिया वाइज पाई परिबे. ओके सो एक्सकावेशन बहुत जगह है मोहेंजोदारो हरप्पा कालीबांगान लोथाल सुरकटाड़ा धोलावीरा ये हमें फेयर आइडिया दिया कि वेरियस एस्पेक्ट्स अच्छे टाउन प्लानिंग केमिति इकोनॉमी केमिति टेक्नोलॉजी रिलीजियंस ए सिविलाइजेशन देखिला. सो फास्ट देखिबा टाउन प्लानिंग. फास्ट देखिबा टाउन प्लानिंग. ओके सो आपण गुटिए शॉर्ट रे एवरीथिंग यू विल गेट. So Harappan civilization is known for its urban outlook and sophisticated sense of town planning and organization. In most cases, the Harappan city had its own citadel and acropolis, which was possibly occupied by the member of ruling class. जोटा कि आम भुवनेश्वर जो देख जोटा कि यूनिट 1 2 3 ये सब माने एमएलए कॉलोनी वगैरह पोस्ट एरिया ये सब सब बड़ बड़ रूलिंग क्लासेस ये रोचंती. Below the citadel is city led the lower town with brick houses, that is burnt bricks, which were inhabited by the common people. The remarkable thing about the arrangement of the house in the city is that they followed a grid system. Routes cut across one another almost at the right angle, and the city was divided into many blocks. Citadel, market area, drainage system ये भलिया तुमर टाउन प्लान देखियो. सिटी वॉल देखो केमती हेची एटा देखियो जदी एमती देखो मोहेंजोदारो रे ये भलिया तंगरो ये हेइतला. कॉमन पीपल यार बाहर आउटसाइड. ओके ये भी आउट के देखियो. एटा दिस इज लोअर टाउन, दिस एरिया सिटाडेल, रूलिंग क्लासेस एरिया रहउचंती. ओके ये रूलिंग क्लासेस है जेमती देखो असेंबली हॉल हैला, स्कूल हैला, बाथ हैला, टेंपल हैला, ये सब तुम ये जगह पाइबो सिटाडेल. देन देखो रिवर एंड ता एपटू लोअर टाउन बेसिकली पाइबो. देखो एंकर बाउंड्री भी हेची या कैनाल पाखदी की बाउंड्री हेची. Drainage system very impressive and drains were made up of mortar, lime or gypsum and were covered either with brick slab or stone slab. Perhaps no other civilization gave so much importance to the health and hygiene as the Harappans. Houses were often of 2 or more storied and though varied in size but quite monotonous. The houses had a bathroom and some even had their own wells, but no window faces the street. No window faces the street. Okay, so ये drainage system थिला. Granaries constitute an important part of the Harappan sites. The house of burnt bricks in Harappan city is remarkable. House in the contemporary buildings of Egypt mainly dried bricks रही था. एमाने एठी burnt bricks से करते हैं. This is a very important. The difference is there. In drainage system, the drainage system of Mohenjo-daro was very impressive. Almost all the cities, every big or small houses had its own courtyard and bathroom. चिंता करो निजर बाथरूम निजर कोर्टियार मध्य से समय थिला. A site such as Dholavira and Lothal, Gujarat, and the entire settlement was fortified, and a section within the towns were also separated by the walls. So Harappan cities site including Mohenjo-daro, Harappa, Kalibangan, Surkotada are having large gateway at various entry point of the city. These gateway are seen even in the inner fortification area also. At Dholavira, a fallen signboard was found close to the main gateway.
It is large inscription having 10 symbols, each measuring approximately 37 cm high and 25 to 27 cm wide, proclaimed some name or title. Okay, so ये सब हरप्पन cities मोहनजोदारो हरप्पा सोरकोटाडा जोटा कि बहुत सारा गेटवे थिला बड़ बड़ गेटवे देन स्ट्रीट एंड ड्रेन्स ये देखो स्ट्रीट एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर है कौन ना तांकर स्ट्रीट साइड लाइन इक्विड विथ ड्रेनेज सिस्टम जोटा कि आम एबे भी कहि आसुची ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिला से समय रे एवं तांकर एते हाई क्वालिटी एंड हाइजीन मेंटेन करथिले जोटा कि एबे भी सेमते नाही एवं प्रॉपर रेशियो ड्रेनेज लीकेज हो न थाए. Okay, this indicate the people had a great civic sense of sanitation and care for health and hygiene. So, Great Bath of Mohenjo-daro is the most remarkable feature of the Harappan site. The Great Bath was a brick structure, 12 meter by 7 meter and is nearly 3 meter deep from the surrounding pavement. The water was evidently supplied by 3 large wells placed adjacent to the room. तीनटा वेल थाए जोटा कि रूम ये थाए. एग्रीकल्चर देखो एग्रीकल्चर कौन सी भी इकोनॉमी हो कौन सी सिविलाइजेशन हो विदाउट एग्रीकल्चर दे कैन नॉट सर्वाइव. आमे चिंता कर जदि आमे सिटीज रे रोचे टाउन्स रे रोचे ओनली पॉसिबल बिकॉज द प्रोड्यूसर द एग्रीकल्चरलिस्ट आर प्रोड्यूसिंग. सो एग्रीकल्चर वाज important source of subsistence for the Harappan. The Harappan villages, mostly situated near the floodplains, produce sufficient food grains not only to feed themselves but also to meet the requirement of the town people. The Harappan produced wheat, especially in Mohergarh, barley, peas, sesame, mustard, millets and rice. So, the surplus grain were stored in granaries as is evident from the discovery of granaries at the site of Harappa, Mohenjo-daro and Lothal. So, the Harappan people were the earliest to produce cotton because cotton was the first produced in this area and the Greeks called it Sindon, which is the derived from the Sindh. Okay, so agriculture जानते हो सबले ये तापर डिपेंड कर. So Harappan people sowed seed in the floodplains in the month of November जोंटी बन्या फन्या हुए. So when flood water receded and reaped their harvest of the wheat, so जतरे छाड़ी जीवा जतरे ताको harvest करनो था and barley in April before the advent of next flood. The Harappan probably used the wooden plowshare to माने लंगल करिया पई काठरे लंगल यूज करथांती. आयरन तो से समय हे नथला आफ्टर 1500 बीसी पर आयरन हैला सो सेठ पे वुडन रो यूज करथि बोली भाबा जाउची. द हरप्पन पीपल कंज्यूम्ड मिल्क कर्ड and were fond of non vegetarian food. Fish eating was common and molluscs were an important source of protein for the people in the coastal region of Gujarat. Domestication of animal. So the domestication of animal was practiced on a large scale. Oxen, buffaloes, goats, sheep and pigs were domesticated. They also kept asses and camels, which were used as beasts of burden. Cats and dogs were also domesticated. Cats and dogs are also domesticated. So there is evidence of the horse as well, but it is clear that this animal was not in regular use in Harappan times. Elephants and rhinoceros were also well known. So cultivation of food grains and domestication of animals are almost similar to the contemporary Sumerian cities in Mesopotamia. But the Harappan people in Gujarat produced rice and domesticated elephants, which were not seen with the people of the Mesopotamian cities.
सो कौन कौन जानल लार्ज स्केल ऑक्सन बोफालो गोट सीफ एंड पिग्स ये मन रखियो क्वेश्चंस आसे एग्जाम रे दे आल्सो केप्ट एसएस एंड कैमल मध्य जोंडे की यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन जोंडे की कैट्स एंड डॉग्स आर आल्सो डोमेस्टिकेटेड मध्य ई समय यूज कराउतला हॉर्सेस देखाई छी बट सेइथरे क्लियर नाही रेगुलर यूज हो नथिला technology and craft the Harappan showed mastery in skill of art crafts Harappan people are well acquainted with the manufacture and use of bronze alloy of copper or tin use करके सामाने करथुले so the craftsmen used to make articrafts from pure copper as well as bronze like spear knives axes the goldsmith made jewelry of silver gold precious stones ornaments like necklaces, bracelets, pendants, brooches have been excavated. So the Harappans were also expert in bead making and bead making shops have been excavated at Chanudara and Lothal. ये सब bead making এটা भी मन रखियो very important and the Harappan people loved to decorate themselves. ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ ବେସିକାଲି ଥାନ୍ତି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା डिफरेंट फिगर से माने मिलची माने बाहर किसी जिनस इंपोर्ट भी होती ये सब ज्वेलरी वगैरह ये सब कस्मोपोलिटान थांती देन इकोनॉमी ट्रेड सरप्लस थिला तांकर ट्रेड देयर वाज नो मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन एंड दे कैरिड ऑन ऑल एक्सचेंजेस थ्रू द बार्टर सिस्टम द हरप्पन सिविलाइजेशन हैड फ्लरिश्ड relation with its contemporary Mesopotamian and Persian civilization. The Mesopotamian records refer to the trade relations with Meluha. Here Meluha basically Mesopotamian used to kahaku Indus Valley people को या Indus Valley civilization से माने Meluha को था इटा मन रखिबो this is also very important part so से माने Mesopotamian जो civilization सहित तांकर जो trade relation थांती तांको मझिरे दीटा intermediate station थाए trading station गोटा दिलमुन जोटा कि probably Bahrain on the Persian Gulf and Mokran या Mokran coast in the Oman ये दीटा जगह तांकर मिडिल पॉइंट थिला सेही ट्रेडिंग सेंटर जो मिडिल पॉइंट थ्रू रे से माने बिजनेस करथांती ओके सो ये देखो गल्फ ऑफ ओमान दिलमुन एटा मकरान ए पटे हेगी आस्थांती या एपट देगी सो हरप्पन इंपोर्ट्स कौन कौन करथांती गोल्ड कौंठू इंपोर्ट्स करथांती अफगान ईरान कोलार साउथ इंडिया रु कॉपर कौंठू आनथांती छेत्री माइंस राजस्थान बालूचिस्तान टीन अफगानिस्तान एंड ईरान रु टीन इंडिया न थाए लाफिस लाजुली अफगानिस्तान रु जाडे पामीर रु टर्कुइस खोरासान रु आनथांती एंड स्टिएटाइड तापी चाहे या ईरान रु बिटुमिन बालूचिस्तान एंड मेसोपोटामिया and lead basically South India. Okay, clear it a very important तुम्हारे क्लास रे माने एग्जाम रे ये आसी पारे कौन कौन इंपोर्ट करथले को जगह रो सो टीन से माने जो ब्रोंज बनै थिले कॉपर तो इंडिया रे मिलुथला बट टीन हमर एठी मिलु नथिला टीन से माने आनुथले अफगानिस्तान प्रोबेबली बेसी अफगानिस्तान और ईरान रो भी आनुथले काहे ना सेपटे ट्रेडिंग होउथला seal the greatest artistic creation of the Harappan culture are seal about 2000 seal have been found 2000 seal मिलिथिला and majority of these carry short inscription with picture of the one horned bull ये देखिए one horned bull तुमरो एठी मिल जो one horned bull and buffalo ये ला buffalo एडिकेटिव लागुଛି buffalo the tiger rhinoceros this is rhinoceros ये ला tiger the goat and elephant this is elephant
excluding horses. In Mohenjo-daro, 3 cylindrical seal of the Mesopotamian type have been found, which depict their trading relation. Okay, ये गोट वगैरह एठी तुमे पाइबो. So ये very इटा ये जो कौन कौन seal रो picture अच्छी, one horned bull, buffalo, tiger, rhinoceros and goat and elephant. Horse इथरे नहीं. So crafts. Harappans were very well acquainted with the manufacturing and use of bronze. Copper was obtained from Khetri mine and Rajasthan, and tin was possibly brought from Afghanistan. So textile impression basically have also been found on several objects. Huge brick structure suggests that brick laying was also important crafts. माने bricks बनेवा, bricks बनेवा important crafts. So this also attests the existence of a class of masons. So the Harappans practiced boot making, bead making and seal making. Terracotta manufacture was also an important crafts. The goldsmith made jewelry of silver, gold and precious stones. Silver, gold and precious stones. So the potter's wheel was in full use, and the Harappans produced their own characteristic pottery, which was glossy and shining. Okay, भलो pottery बनौथिले जेडे कि साइन करथला. boot making होथला, bead making, seal making ये इंडस्ट्री सब चलथिला. टेराकोटा मैन्युफैक्चर, टेराकोटा बेसिकली जानि छ केला, बेसिकली बेक्ड ये सेटा बनौथिले. ब्रिक लेइंग जोंडे कि सेटा बहुत बड़ा ऑक्युपेशन थिला, सेति पई तुमरा घर फर तांकर ड्रेनेज सिस्टम सब बर्न्ड ब्रिक यूज करथांती. तो सेटा भी मध्य very important. So among the various gold, terracotta and stone figure found was a figure of priest king displaying the beard, beard and pattern robe. Another figure in bronze known as dancing girl, known as a dancing girl, is only 11 centimeter high and shows female figure in a pose that suggests the presence of some choreographed dance form enjoyed by member of civilization. So एमती छिड़ा है ना, तो कोरियोग्राफी करा ही थिबो. So terracotta also included cows, bear, dog. In addition to figurine, the Indus River Valley people are believed to have created necklace, bangles and other ornaments. Society, urban society, तामाने कौन ट्रेड एंड कॉमर्स थिला, एलिट क्लास थिबे, सिटाडेल थिला, वेल टू डू मिडिल क्लास मर्चेंट्स रहउथिले, वीकर सेक्शन लोअर टाउन रहउथिले. तो आमे डिस्कशन ऑलरेडी करि सारछि. एवं हरप्पन सोसाइटी बिलीव करा जा मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल माने फीमेल मेंबर्स आर द हेड ऑफ द family. Okay, so nature was large number of terracotta, fire baked earthen clay, female figurine have been excavated, which are representation of the great mother goddess. The terracotta figurines and the stone sculpture indicate the dressing style of the people. So the men are mostly shown wearing a dress wrapped around the lower half of the body with one and worn over a left shoulder, and under the right arms garment was made of cotton. ये तुम देखियो men are mostly wearing जोंटे कि भलिया cotton ये करिगी तुम देखा जाए. So woven cloth has been found at Mohenjo-daro, and the Harappan people were well acquainted with spinning and weaving. Religion, Harappa, numerous terracotta figurines of women have been found. In one figurine, a plant is shown growing out of the embryo of a woman. The Harappans therefore looked upon the earth as a fertility goddess. भगवान को देखुथिला earth को fertility goddess माने किछि मिलिबो. So and worship her in same manner as a Egyptian worship the Nile as a goddess. Nile को जेमती goddess वाला देखुथिले सेमती earth को भी माने goddess वाला देखुथिले. So male deity is represented on a seal with 3 horned heads. तुमे देखिबो seal रे जो देखैथिले एटा 3 horn
So another peculiarity, so जोंडे कि sitting a posture of yogi हमें देखिले. This god is surrounded by elephant, tiger, rhinoceros, has buffalo below his throne, and at his feet appears to two deer अछंती and depicted god identifies पशुपति महादेव भलिया तांको depict करा जाय. So another peculiarity of the Harappan religious belief was that they worship of stones in the form of linga, phallus worship, Shiva linga जोंडे कि uni, fertility goddess. One terracotta piece from Kalibangan shows picture of the linga and yoni together. So the people of the Indus region also worshipped trees and animals. Tree और animal को मध्य worship करती. The most important of them is the one-horned unicorn, which may be identified with the rhinoceros. And next important was humped bull. Amulets also been found in the large number. So ये basically majority of the आपण मान देखिबे हरप्पन्स सबु. नेक्स्ट देखिबा बुरियल प्रैक्टिसेस माने केमती करथंती. तीन प्रकार बुरियल प्रैक्टिस करथंती. मोस्टली हरप्पा, मोहेंजोदारो, कालीबागान, लोथाल ये एंड रूपार रे भलिया सिस्टम देखिथिले. कंप्लीट बुरियल पूरा बॉडी को पोती देबे. फ्रैक्शनल माने कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द बोन्स ओटा कि ये रे फिंगी देले एमती पड़िया रे ताको जंगली जानवर खाई गला परे जहा बंचिला सेही हाड़ को नहीं पोती देले. देन पोस्ट क्रिमेशन बुरियल माने एबे जोंडा प्रैक्टिस होची जेमती कि पोड़ी साला परे. सो डेड बॉडी आर प्लेस्ड इन नॉर्थ, एटा वेरी इंपोर्टेंट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फूड पॉटरी एंड अदर आइटम्स मध्ये ताको सहित दिया होतला बॉडी सहित. सो आर्कियोलॉजी हैव फाउंड कफिन्स containing bodies in Harappa. Small circular pits containing large urns and pottery have also been found in Kalibangan. बेसिकली किछ कि तांकर खाद्य पान पई किछि से माने दौ थांती. Okay, so major Harappan civilization site देखिवा 1921 Harappa, Sahiwal district, Punjab, in the banks of river Ravi. दयाराम साहनी ये खोलिथिले and पाइथिले कोन कोन pottery with Indus script, cubical limestone weight, fen slab, sandstone statue of human anatomy, copper bullock cart, granary, coffin burial only found in Harappa, and terracotta figurines. Then 1922 Mohenjo-daro, Lakrana district of Sindh on the banks of Indus. RD Banerjee, Great Bath Granary, unique earth seals, so most number of it in the here. Bronze dancing girl statue जोटे कि हमें एबे देखिले seal of men with deers, elephant, tiger and rhinos around considered पशुपति seal. Steatite statue of beard man, bronze buffalo ये सब हमें पाइथिले. This is the mega cities Mohenjo-daro and Harappan 21 22 ये दीटा को मन रखिथिबो आखि बंद करिगी. 1929 ने तापरे सुटका गेंडो बालूचिस्तान on the दास्त रिवर. स्टेन बेसिकली ये डिस्कवर करथिले, एक्सकैवेट करथिले. ट्रेड पॉइंट एटा अलाहाबाद एंड बेबीलोन मित्र. फ्लिंट ब्लेड्स मित्र, स्टोन वेसल, स्टोन एरो हेड्स, सेल बीड्स, पॉटरी, बैक्टीरिया, बेसिकली Margian archaeological complex associated with the copper bronze disc is through 500. 1931 Channu Daro, Mulun Sandha, Sindh on the river Indus. NG Mujumdar, Bengal factory एठी देखा इतला. Inkpot, bead makers, the footprints of dog chasing a cat and cart with seated driver. ये सब मध्य ए सिटी ओनली सिटी जो थरे citadel नथिला. Only city which is not citadel. Citadel नथिला. 35 Amri, basically close to Baluchistan on the banks of river Indus. Say Mujumdar करथिले. Antelope evidence, rhinoceros evidence मिलिथिला. 53 रा कालीबांगन, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, घग्गर रिवर रे. अमलानंद घोष, एन घोष या एम घोष कहा जाए. लोअर फोर्टिफाइड टाउन, वुडन ड्रेनेज सिस्टम, कॉपर ऑक्स, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक एडी हेतिला. वुडन प्लाव एठू इंफॉर्मेशन मिलिथिला. केमेल बोन, फायर अल्टर्स, केमेल्स जोंडे कि फेरोलैंड ये सब मिलिथिला. 1953 लोथाल भी डिस्कवर हेतिला. कालीबांगन एंड लोथाल सेम ईयर डिस्कवर हेतिला. एसआर राव बेसिकली एसआर राव ये डिस्कवर करथिले. गुजरात ऑन द भगवा रिवर नियर गल्फ ऑफ केम्बे. सो इटा पोर्ट टाउन थिला लोथाल एंड धोलावीरा. Graveyard, ivory weight balance, copper dog, first man-made port, dockyard, rice husk, fire altar and chess playing एठी information मिलिथिला.
64 रे सोरकटाडा गुजरात रे जेपी जूसी बाहर करथिले बोन्स ऑफ हॉर्सेस सेठी मिलिथिला बीड्स स्टोन कवर्ड बीड्स ये मध्य मिलिथिला 1974 बनवाली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा RS Bisth beads barley oval shaped settlement the only city with radial street toy plow the largest number of barley grains in 1985 very important धोलावीरा गुजरात रन ऑफ कच्छ रे मिलिथिला सही RS Bisth डिस्कवर करते दीटा को बनवाली एंड धोलावीरा exclusive water management this is very important and the only site to be divided into three parts lower town middle town citadel giant water reservoir मिलिथिला unique water harnessing system dams embankment stadiums rock cut architecture मध्य एठू मिलिथिला so decline देखिवा so Harappan decline is roughly dated around 1900 BC but no archaeological evidence accurately provides explanation for the deurbanization. The mature phase was followed by basically late Harappan phase. So किछि theory अछंती कोन Aryan invasion theory जोंडे कि Wheeler and Gordon देथिले ecological disturbance theory Fairchild change of river course Dales MS Vatsa HT Lambik low rainfall Stain देथिले flood पई Meck and SR Rao drying of Ghaggar and increasing aridity DP Agrawal and Sood earthquake जोगु Raikas and natural calamity जोगु Care Kennedy ये सब theory देथिले क्वेश्चन देखिलो who was the director of the archaeological excavation that led to discovery of Harappa and Mohenjo-daro डायरेक्टर किए थिले Harappa and Mohenjo-daro discover करिवा पई so correct answer is John Marshall very important John Marshall was the first English Director General of Indian Archaeological Survey in 1902 to 1931. Who in 1920s are responsible for large-scale excavation that revealed Harappa and Mohenjo-daro, the two largest city of the previously unknown Indus Valley civilization. Two Indians who are associated with discovery Indus Valley civilization are Rakhalda Banerjee and Dayaram Saini. RD Banerjee and Dayaram 21 रे Dayaram Saini कले Harappa and 22 रे and 27 RD Banerjee Mohenjo-daro. Then Harappan cities represented by the archaeological site of Lothal तुम्हें पॉज मारिकी तुम्हें करिवो मु टिके स्पीड कर दोजी सो दैट बहुत सारा जिंस कवर करिवार अछि साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ एबे कहि कहली हरप्पा भागोवा sorry Lothal basically archaeological remains of Harappan port town Lothal is located along the Bhagava river a tributary of Sabarmati in the Gulf of Khambat. Which of the following statement about Indus Valley civilization not true? Not true. Indus Valley civilization is not true. देखो सेमाने सब जानथिले एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम थिला ट्रेड एंड कॉमर्स थिला वर्शिप मदर गॉड बट एटा नथिला आयरन 1500 बीसी रे 1500 बीसी रे आयरन देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सो तुमे देखियो यदि हरप्पन सिविलाइजेशन हमें देखिलु नेक्स्ट हमें देखिबा तुमरो वैदिक एज 1500 बीसी रु 1500 बीसी रु 1000 येला अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज 1000 रु 600 ये हला लेटर वैदिक एज सो टोटल 1500 रु 600 बीसी हमें एबे देखिबु वैदिक एज Vedic age will start now. So Vedic age basically comes from the word Veda. Veda basically words Veda. The word Veda derived from the root Ved, which means to know. Which means to know.
the term Veda refer to sacred knowledge contained in the Vedic text. Contained in the Vedic text. So Veda is the earliest religious text in the world. So Aryans or the semi-nomadic pastoral people. So Veda कोउठु originate हेले Vedic people या Vedic Aryans कोउठु आसिले will dig. So original homeland कौन basically बहुत सारा controversy अच्छी कोउठु आसंती कौन आसंती बहुत सारे यहाँ पर theory अच्छी किसी कहती कि area around the Caspian Sea in Central Asia Max Muller, while others think they originated from the Russian steppes. Bal Gangadhar Tilak was of the opinion that the Aryans came from the Arctic region. So किछि किछि जो कहिसंती ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ये दयानंद सरस्वती कहिसंती तिब्बत रु आसंती ये सब मन रखिबो प्रीलिम्स रे क्वेश्चंस आसी पारे बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक एंड पोलर रीजन रु कहिसंती पेंका जर्मनी रु यूरोप रु कहिसंती यूरोपियन स्कॉलर बेसिकली बाल्टिक सी यूरोपियन स्कॉलर बेसिकली बाल्टिक सी रीजन एंड जगन्नाथ झा ब्रह्मर्षि देश एंड एलडी काला काश्मीर एंड हिमालय region आसचंदी बोली कहा जाय. So the Vedic age started with Aryan occupation of the Indo-Gangetic plains. So meaning of the word Arya means noble. So they speak Sanskrit, Indo-European language, which is similar to the Sanskrit. सेइथि पई कहा जाय कि ये Indo-European रु आसचंदी led rural semi-nomadic life. So they are the basically villagers, rural people. They are not like the Indus Valley civilization people who are urban in nature. So life as compared to the Indus Valley peoples who are also urbanized, no, they believe that they are entered India through Khyber passes through Pashchandi. So Veda basically chari prakar Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. These four Vedas are also referred to as Samhita as they represent the oral tradition of the time. Okay. So ताकू संहिता मध्य ना रे कहा जाए. So four Vedas जो देखिबा oldest Veda ला Rig Veda is divided into 10 books known as Mandala. It also includes Vishwamitra, famous Gayatri mantra, and Purusha Sukta prayer, the story of Parimal man. The Rig Vedic priest was known as Hotri. The Rig Vedic priest was known as Hotri. And Yajur Veda, it is essentially a manual for the Atharva priest who was responsible for almost all the ritualistic tasks of the sacrifices. It is principally a prose form. It has been divided into two sections, the earlier black and the more recent white. Okay, Yajur Veda, very important item madhya. Dita section होटेला black and जोंटा की recent हला white. Rig Veda and Rig Veda विषय देखिबा oldest religious text in the world, first testaments of the mankind, the collection of hymns in praise of number of gods and goddesses, 1028 poems or hymns of Rig Veda, 10 books Mandala, Gayatri mantra composed by sage Vishwamitra and addressed to the goddess Savitri, a solar deity. Very important. Vishwamitra gaithile. So Purusha Sukta hymns, origin of Varna system, 10th Mandala, and Surya Shakti hymns reflects upon the marriage ceremony, that is 10th Mandala. Sama Veda. The Sama Veda is shortest of all the four Vedas. The Sama Veda is collection of Rig Veda verses originated in the form of poetry to facilitate singing. The Sama Veda is specially intended for Udgatri priest. Then Atharva Veda. The Atharva Veda is basically compilation of magical spells and charms जोंटा कि evil spirit को हटेया पई से यूज करा जाए, disease को हटेया पई यूज करा जाए. So Atharva Veda is the latest one and contains hymns of some of Rig Veda, 20 Kanda basically books and 711 hymns mantra, most of the tales of how केमिति एविल स्पिरिट को हटेबो. देन ईच वेदा जेमिति ऋग वेद, साम वेद, अथर्व वेद, अचुर वेद, यजुर वेद, चारि वेदा को मध्य ईच वेदा को चारि पार्ट रे डिवाइड करा जाय.
ऋग्वेद को 4 पार्ट, अथर्ववेद को 4 पार्ट, यजुर्वेद को 4 पार्ट एंड सामवेद को 4 पार्ट, सबुटा को 4 पार्ट रे तुमरो डिवाइड कराई छी। सो ईच वेद को 4 पार्ट गोटे संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका एंड उपनिषद। उपनिषद और इसको कहती कौन ना वेदांत, या को कौन कहती वेदांत। संहिता, द संहिता आर द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ द वेदास। इट कंटेन्स मंत्र, प्रेयर्स, litanies and hymns to the god. Brahmanas, the Brahmanas are prose interpretation of Samhita chapters. Prose interpretation of the Samhita chapters. It gives details and explanation of sacrificial rituals and their outcomes. Okay, so Brahmana basically prose interpretation of Samhita यार ये संहिता कौन ना सबुठू ओल्डेस्ट पार्ट वेदार एंड कंटेन मंत्र, प्रेयर, जोटा कि लिटनीज एंड जोटा कि हिम्स, मंत्र वगैरह ये सब। देन ब्राह्मण बेसिकली प्रोज इंटरप्रिटेशन ऑफ द संहिता चैप्टर यार प्रोज इंटरप्रिटेशन, ये डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन पूरा दिए, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस केमती कोन तार एक्सप्लेन। अरण्य का टेक्स्ट ऑन फॉरेस्ट लाइफ ऊपर केमती इंटरप्रेट्स द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स इन द सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल वे रे। देन उपनिषद, द 108 उपनिषद, 13 of which are considered the most significant Upanishad. They contain great variety of philosophical ideas about sacrifices, the body upre, universe upre, and they are the most closely associated with concept of Atman and Brahman. Brahman and Atman सहित ये most closely ये माने associated रही कि अच्छी, तो सेटा very very important. These are very very important अपन माने देखिए। Okay, then yes, okay, चारिटा वेद हैला। उपनिषद विषय जदि आमे जानिबा टिके, so Upanishad derived from the root Upanish, which means to sit down near someone. It indicates the tradition of student and teacher. Pure philosophical text. This is pure philosophical text. It is also known as Vedanta because they represent the end of Vedic literature. They represent end of Vedic literature. Defined the doctrine of action. It defined the doctrine of action or karma. God या Brahma and soul Atma as identical. Okay, एथरा कोन अछि कर्म विषय, ब्रह्मा गॉड विषय या आत्मा सोल विषय बेसिकली आइडेंटिकल डिफाइन करे छी। एंटी रिचुअलिस्टिक 108 उपनिषद and were composed around 800 and 500 BC. Language is classical Sanskrit and not Vedic Sanskrit. Tattvam asi माने that you are that, basically चंदोग्या उपनिषद रे मेंशन अछि। सत्यम जयति जे मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद रु पाइछि। किछि आलिड वैदिक लिटरेचर गोटाला वेदांग, दैट इज लिम्ब ऑफ द वेदा, कोन ना शिक्षा, शिक्षाला प्रोनाउंसिएशन, कल्पला रिचुअल्स, व्याकरण हला ग्रामर, निरुक्त हला एटिमोलॉजी और फोनेटिक्स, देन छंद मैट्रिक्स और मेटियर एंड ज्योतिष हला एस्ट्रोनॉमी। Then darsanas, they propagate the virtues of life. They propagate the virtues of life. This six school of Indian philosophy are Nyaya philosophy written by Gautam. This is very very important. Do remember. This is हमें या ऊपर आगो को देखिवा six school of philosophy. This is six school of philosophy. Vaisheshika written by Kannada Rishi and Samiksha basically Sankhya basically written by Kapila. Yoga written by Patanjali, Purva Ramdev Baba नुहति Patanjali, Purva Mimamsa written by Jamini and Uttara Mimamsa written by Badrayani. ये ancient history जत्ते मु deeply पढ़ी दउची तुमको आउ किछि जरूरत पड़िबनी दरकार पड़िबनी, you will get all these things.
उपवेद धनुर्वेद आर्ट ऑफ वॉरफेयर, आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ, शिल्पवेद आर्किटेक्चर, गंधर्ववेद म्यूजिक, ये सब चारिटा बेसिकली उपवेद अच्छी या उपरे जानिबे। देन ब्राह्मणास, ऐतरे ब्राह्मण डील्स विथ ड्यूटीज ऑफ ऑल फोर वर्ण, चारिटा वर्ण जोने कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये चारिटा वर्णर बेसिकली ऐतरे ब्राह्मण ताकर ड्यूटी कोन काम कोन इथे मेंशन रहिछि। देन मुंडका उपनिषद र कोन ना सत्यमेव जयते मेंशन अछि। सतपथ ब्राह्मण बेसिकली अबाउट द प्लाउइंग रिचुअल्स एंड कांसेप्ट ऑफ रिबर्थ इथे मेंशन अछि। चंदोग्या उपनिषद मेंशन 3 आश्रम of varna ashram dharma. It also talks about itihasa purana tradition which is mentioned as a pancham veda, and shukla yajurveda talks about rajasya yugya. Okay, shukla ayurveda rajasya yugya katha mention. These are very important तुम्हार prelim exam रो ये सब आसीबो। So basically Vedic Aryan कौमान या ऊपर आमे देखिदेले किछि आर्यन्स आसीचंती, किछि जो जो एरिया रो आसीचंती आमे देखिदेले। जियोग्राफिकली बेसिकली जो जो एरिया रे से माने अछंती, सप्त सिंधु रीजन उडेला सिंधु रिवर, देन बितास्ता जोंटे कि झेलम एबे कहा जाउची, अस्किनी जोंटे कि चेनाब कहा जाउची, पारुसिनी रवि, विपाशा व्यास, विपाशा बसु व्यास रिवर बीबी, सूत्रुद्री सतलेज ये भी एसएस, एंड सरस्वती जोंटे कि एबे नाही। So Sutudri Satledge, Vipasa Vyas, Parusini Rabi, Parusini, and Askini Chenab, N Chenab, and Vitasta Jhelam. Okay, VJ and Sapta Sindhu basically Sindhu, ये हला सिंधु सिंधु एबे भी अछि सिंधु सभ्यता, ये सब देखो इंडस वगैरह ये सब रिवर। सो वैदिक पीरियड 1500 to 600 BC. The term of literature as well as social and cultural evolution, Vedic texts reflect two stages of development. The Rig Veda period, also known as early Vedic period, corresponding to the time when the Rig Vedic hymns were composed, which was between 1500 BC to 1000 BC. Then Rig Vedic period 1500 ରୁ 1000, then later Vedic hela 1000 ରୁ 600 आमे देखिजु। So literary sources. The literary sources refer to 4 Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Athar Veda. चारिटा वेदा गोटे ऋग वेद, साम वेद, यजुर वेद, अथर्व वेद. Out of these, Rig Veda is the earliest text. Rig Vedic Samhita consists up to 10 books or mandala, है ना, with books 2 to 7 considered to be the earliest, belong to early Vedic age. Book 2 to 7. So archaeological sources basically कहूची कौन ना, excavation conducted in Punjab, UP and northern Rajasthan, Indus Ghogha region. Last 40 or the last have been ordered many post Harappan or Chalcolithic settlement in the settlement. See literary sources कौन information book 1, 8, 9, 10 जोंटा कि ऋग वैदिक संहिता रो ये information later Vedic period रे, and other Vedic text जोंटा कि later Vedic phase रे लेटर एडिशन जहाँ सब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व ये सब आउ संहिता ऋग वेद संहितार केवल बुक 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मात्र 6टा बुक्स ये ऋग वैदिक समय रा, बाकी आउ सब बुक्स 1, 8, 9, 10 एवं ये संहितार ऋग वैदिक संहिता तापर फिर पुनी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तार सब पार्ट लेटर वैदिक एज रे मिलिबो। देन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी तुमरो राजस्थान, हरियाणा ये सब जगह रे आपण माने पाइबे जोंडे कि आयरन लेटर वैदिक एज रो आयरन बहुत सारा यूज होईची। सो देन देखिबा पॉलिटिकल लाइफ, देन देखिबा पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द वैदिक एज. So there is no well defined political hierarchy in the early Vedic setup. However, changes during this period gave rise to the socio-political hierarchy which manifested itself in the origin of Varna system during the later Vedic phase. The early Vedic society was largely egalitarian and governed by tribal values and norms. Governed by tribal values and norms. So feature देखिए political life of the early Vedic period, political life of later Vedic period. Social unit. The Aryan's chief social unit was known as Jana.
The concept of Janapada, basically later Vedic age, Jana becomes Janapada, and it is this Janapada becomes mahajanapadas in the 6th century BC. The later Vedic period, the word Rashtra was also used for the first time. Similarly, chief Jana was headed by Rajan, whose main function was to protect the Jana and cattle from the enemies. Jana को और cattle को protect करिए पे. This Rajan or chief now assumed the role of protector of the territory where his tribesmen had settled. ये protector है कि रोइला. Then post chief, not hereditary and tribal assemblies were involved in the selection of the Raja from amongst the clansmen. Later Vedic age, the hereditary and elaborate coronation rituals such as Bajapaya, Rajaswa and also the sacrifices established during these phases. Administration, Rajan was helped in his task by tribal assembly called Sabha, Samiti, Vidhat, Gana, Parishad, which are mentioned in the Rig Veda. Sabha basically a council of select clan member. Samiti comprise the whole of clan. So during this time, the Sabha overtook the Samiti in relevance. Texas. The people gave the chief what is known as Bali. This is voluntary contribution. जे कहे कि the chief contribute करूची किछि help करूची protect करूची ताको गाई को ताको लोकन को सेथि पे ताको किछि voluntary या ताको स्वेच्छा रे किछि दान करंती जेमति आमे ब्राह्मण माने को किछि स्वेच्छा रे दान करू. Then Bali becomes compulsory हे गला later Vedic age रे, and Bhaga and Sulka ये gradually assume the form of regular tribute to काहाकू राजा को और टैक्सेस दबाको लागिले. आर्मी ये एरिया देखिबा तुम्हारा अर्ली वेदिक एज, ये हैला लेटर वेदिक एज. दिस सेना और आर्मी was a temporary fighting force made up of able bodied tribesmen who were mobilized during the war time. A rudimentary army emerged and all these lived on the taxes offered by the people. Status of Brahmins. The clan held large yagnas or sacrifices which were performed by Purohita. As Rajania's important grew, so did the Brahmanas. The status of the officiating priest became at par with the gods in the later period. So they received the Brahmin, they received large portion of the Raja's gift and assumed the superior position in comparison to the other members of the clan. Brahmana basically धीरे धीरे बड़ा position होगा चला पुरोहित जीवन पर करते. The status of officiating priest become at par with the gods and later period, and the officiating Brahmana had to satisfy with dana. जेमती आमे एबे भी दान वगैरह सब दउछु. Social life of Vedic period. This is very important. Social life one by one आमे देखिबा. Vedic period रे total Vedic period, early Vedic period. The early Vedic period of social structure which are based on clan relation and was largely egalitarian become much more complex as well later Vedic period. एई सब mindset रखी देखुथबो मु जतरे comparison करूथबी दीटा करो early Vedic age later Vedic period रे. Early Vedic society was not divided on the basis of caste, and while later Vedic age basic of caste varna basis रे divided हे गला. देखिबा social life of early Vedic. Family, the family belongs to large group known as Vish or clan. And social life later Vedic कौन? So basically early Vedic देखिदवा one or more than one clan made jana or tribes. The jana was the largest social unit. The jana was the largest social unit. So later Vedic age, the family continues to be the fundamental unit of the Vedic society.
family continues to be the fundamental unit of Vedic society. With 3 or 4 generations living together, the later Vedic family grew large enough to be called joint family. Varna system. There is no Varna system in the early Vedic period, but 4 Varna जोटा कि divided हो गला यही समय रे 4 Varna divided होला यही समय रे that came divide society for Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudras. Then status of women. Despite the patriarchal nature of society, women played an important role in it. They had been educated and were entitled to the assemblies. The women poets Apala, Vishwambara, Ghosa and Lopamudra, ये basically poets थे इस समय, and they are free to choose their partners and they could marry whenever they wanted. So in later Vedic phase, women status कौन ना considered subordinate to the men है, धीरे धीरे status decrease ହେଲା and were not involved in any major decision making. Their participation in public meeting was restricted. Child marriage were becoming more common. Varna ashrama system. No such system was prevalent during the early Vedic period. The text mentioned in 3 basically later Vedic age. Brahmacharya, 3 stages of life, student life जोटे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ household life and banapastha जोटे की hermitage ये अच्छी. So later on sannyasa the 4th stage was added. Together with varna it came to be known as varna ashrama dharma. Tribal conflict. The growing need for more pasture land and cattle contributed to an increase in इंटर एंड इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हेगला. लड़ाई होता है कैटल और लैंड. So inter tribal conflict were frequent and example of being battle of 10 kings mentioned in the Rig Veda. The nature of intra tribal conflict and conflict within the tribes also changed. Fighting was now for the acquisition of land. या पूर्व थिला कोन कैटल. Later Vedic age रे land उपरे लड़ाई हबा को लागला. Then Gotra system. In the early Vedic society, no such system was prevalent. Gotra system. ये develop हैला later Vedic age रे. Common Gotra descended from common ancestor and no marriage between the same Gotras हेई परिवा नहीं. Then marriages was typically monogamous but chief occasionally practiced polygamy. Despite the prevalence of the polygamy, monogamous marriage were preferred. County later Vedic age. Social groups, occupation was not based on birth. Varna or color was used to distinguish between Vedic and non-Vedic people. So it occupation birth हिसाब रे होना था. Then धीरे धीरे division है गला social group, occupation अनुसार एवं occupation अनुसार flexibility धीरे धीरे कमी गला. By birth basically occupation attach है गला by birth सहित. Gotra system. The institution of Gotra first appeared in the Vedic period to signify the descent from common ancestor. Gotra were named after legendary sages like Kashyapa, Bhadravajwaja, Sandilya, Gautama, Bhrigu, Bhargava, Vasishta, Vishwamitra. ये सब Gotra है. Marriage was prohibited between persons belong to same Gotra. Same Gotra रा मनुष्य को marriage prohibit थिला. एबे भी एटा practice होउची तुमे देखि परिबो. Types of marriages. Brahma Vivaha, marriage of a girl with a boy of same Varna while observing all the Vedic rites, rituals along the dowry. Daiva Vivaha, father donated his daughter to priest as a part of Dakshina. Then Harsha Vivaha, giving girl to a man after accepting the bribe price. Paisa negi. And Prajapati Vivaha, marriage without dowry. Gandharva Vivaha, love marriage. Asura Vivaha, marriage by purchase of the bride.
Paisacha Viraj, marriage to a girl after seducing or raping her, and Rakshas we are marriage by abduction of the girl. So these are marriages types of marriage or Varna system. Gotala Anulama, Gotala Pratilama. Anulama kona man with higher Varna and a girl of lower Varna. Eta ko Anulama viva, eta ko accept kara jay. Pratilama mana girls with higher Varna, men with lower Varna, eta ko Pratilama viva, which is not allowed. Religious life of Vedic period. The hymns of Rig Veda basically reflect the religious ideas of Vedic people. They revere the natural forces around them, such as wind, water, rain, thunder, fire, and so on, over which they had no control and invested nature with divinity conceived in human forms. So, religious feature देखिवा, religious feature basically हमें देखिवा. So, Rig Veda, Indra, Agni, Varuna, Mitra, Aayush, Pusanas, Yama, Soma are the all male gods. Many goddesses such as Usas, Saraswati and Prithvi hold secondary position in the pantheon. The most frequently mentioned god in the Rig Veda is Indra. So, Indra is a Rig Veda most important god. Similarly, later Vedic age Vishnu and Rudra also are mentioned minor deities in the Rig Veda, rose to prominence, and Pusana, who are used to protect cattle, become the Sudra god. Then Yajna, the sacrifices, hymns and prayer were recited, and these yajna were typically performed by the priest. These sacrificial rituals also resulted in the expansion and development of knowledge of mathematics and animal autonomy. So, important yajna included Ashwamedha sacrifice, Vajpaya and Rajaswaya sacrifices. Toward the end of this period, a strong reaction against priestly domination over the complexity of the yajna led to formulation of philosophical doctrine that laid out in Upanishad. आमे देखियो आगु को philosophy सब जो six system of philosophy आसिला. So these are basically religious feature of the Vedic and later Vedic period. So next देखिवा economic life of Vedic period. The Rig Veda hymns provide vast evidence of significant cattle in the cattle जानिछो सबुठी important go. The go and the which means cow, the root of other words. Cattle were primary measure of wealth, and wealthy men who owned many cattle was referred to as gomat. जा पाखर बेसी गाय अछि ताकू गोमत कह जाय. And conflict and battles basically गाभिस्ती माने गाय related गाभिस्ती, गाभिसेना, गाभ्यत and other terms during the time period. So the Raja or chief is known as Gopati or one who protects cows, and Godhuli is a term used in the Rig Veda for a measure of time. Distance is called Gabhyuti. So daughter is referred to as Duhitri or one who milks the cow, Duhitri. So kinship unit is labeled as Gutra. So इठो Gutra Gavi. So सबू go related matters आसिला. So देखिवा occupation कौन? The dominant occupational activity in the pastoral society was cattle. Cattle है dominant occupation. Economy life कौन? Transformation from pastoral to sedentary agrarian life. Agriculture. There are no other grains mentioned along with yava or barley. Shifting agriculture was practiced. Rice was the staple diet of the people, and rice is mentioned in the Vedic text as brihi or tandula or sali. These are very, very important to remember, guys. These are very, very important. So it appears that during this period, double cropping was also practiced. So aside from barley, people started growing wheat, rice, pulses, lentils, millet, sugarcane and other crops madhya mane grow karuthile. Domestication of animal, cattle, sheep, goat and horses were raised for milk, meat and hides. The buffalo had been domesticated for agricultural purposes. During this time,
the god Indra was given the title Lord of the Plough. Lord of the Plough, god Indra को title दिया था. Taxes, the people gave the chief what known for Bali, जोटा कि voluntary basis, जेटा कि मैं कही थी तुमको. There is no officer mentioned for tax collection. Bali, Bhaga, Sulka gradually assume the form of regular tributes and taxes. Bhagulagha, the tax collecting officer thanti. Bhagulagha, Lugha. Bhagalugha. Basically, iron technology that did not use iron technology and were familiar with copper. Socketed axe, इस समय iron technology हमारे use कर ले of iron. Iron tipped plowshare and hoes increase the efficiency of agriculture. Medium of exchange. Cows were the most popular means of exchange. Priests were compensated with cows, horses and gold ornaments for performing sacrifices. Okay, so very important से priest को कौन दिया होता है? एबे भी दिया होची गाय फाई देखतो ने तुम्हारो घरे किए कार डेथ हेला पर गाय या ये कौन दियंती. So in the later times, gold coin called Niska were used in transaction. धीरे धीरे Niska को हमें पढ़े गलु transaction पाई. So these are basically तुम्हारा Vedic age हमें देखी देलु. So Vedic age रा हमें religious life, economy life, तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैरिज, गोत्रा सिस्टम, सोशल लाइफ, ये सब हमें देखीदेलु. एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ हमें सब देखीदेलु. नेक्स्ट हमें देखा वैदिक सिस्टम, महाजनपदस एंड राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देन मौर्यन एज. सो ये सब गोटे क्लासेस रे आपण कंप्लीट हो जिवो. आपण गोटे क्विक रिवीजन पई गोटे समय मिल जिवो. सो ये हमें देखिबा. हाय गाइस, so we have completed till now Stone Age, Indus Valley Civilization, Vedic Age. Now post-Vedic Age, basically Mahajanpadas. Then we will see the Mauryan Age, basically tomorrow Magadha dynasty पर Mauryan Age. Mauryan Age पर Post-Mauryan Age. Post-Mauryan पर हमें देखिबा Gupta Age and post-gupta age. So these are by key remaining chapter we need to complete. So one short you will get everything जोंटा कि आपण माने देखि परिबे. So ये एग्जाम पई, प्रीलिम्स एग्जाम पई खास करके बहुत हेल्प हबो एवं ओवरऑल सब एग्जाम पई आपण ये इथरो बेनिफिट्स पाई परिबे. सो आपण देखंतु 16 महाजनपदस आमे देखले 16 टा महाजनपदस थिले सेही समय 16 महाजनपदस. आउट ऑफ 16 महाजनपदस वन महाजनपद जेटे कि एम्पायर कला सी हला मगध एवं मगध रो सबुठ बड़ एम्पायर कला कि मौर्य. ओके, मौर्य एम्पायर. सो दीज आर 16 महाजनपदस: कंबोजा, गांधारा, कुरु, पांचाला, कोसला, मल्ला, काशी, ब्रिजी, अंग, कौसंबी, छेदी, अवंती, मत्स्य, सुरुसेना एंड आशका. These are basically तुमरा थिला 16 महाजनपदस. So one by one हमें महाजनपद देखिबा एवं तांकर विषय हमें देखिबा. So state हला basically अंग, modern district of मुंगेर, भागलपुर एंड बिहार. ये हला अंग. कैपिटल था चंपा, लोकेटेड इन द रिवर चंपा एंड गंगार कन्फ्लुएंस रे या जोंटी मिली से जगह रे थिला. देन तार किंग थिले के चंपा वाज ए इंपोर्टेंट कमर्शियल सेंटर ऑन द ट्रेड रूट्स एंड मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम हियर टू सुवर्ण भूमि जोंटे कि साउथ ईस्ट एशिया को एटू जाउछन. सो चंपा स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपोर्टेंट प्लेसेस. सिमिलरली काशी. Similarly, it is Kashi. So Varanasi, जोंटे के modern Varanasi. Kashi was eventually captured by Kosala.
कोसला जोटा कि ईस्टर्न यूपी इंक्लूडेड अयोध्या एंड द ट्राइबल रिपब्लिक एंड टेरिटरी ऑफ साक्यास ऑफ कपिलवस्तु। देन सरायू रिवर, ये एरिया रो सरयू रिवर, सरयू या सरायू रिवर को आजा डिवाइडेड द स्टेट इनटू टू पार्ट, एटा नॉर्दर्न पार्ट ता श्रावस्ती एंड साउदर्न पार्ट एटा कुशवती। सो ये थिला कोसला। कोसला मु एबे तुमको जदी मैप रो देखैबी आपण माने देखि परिबे, ये हला कोसला। एट देखो गंगा दी पार्ट रे बांटी देछि, पार्ट कर देछि, तो सही कथा एठी देखुतले आपण। साउथ साउदर्न पार्ट हला बेसिकली कुशवती एंड नॉर्दर्न पार्ट हला श्रावस्ती। एंड तांकर किंग थिले प्रसन्नजित जोंटे कि बुद्धांकर कंटेम्पोरारी थिले, बुद्धांक सहित समकालीन थिले। द ट्राइबल रिपारी ऑफ साक्या ऑफ कपिलवस्तु इंक्लूडेड लुम्बिनी एंड व्हिच इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धर बर्थ प्लेस एटा माना जाए। Then Baji, the north of Ganga in division of Tirhut, confederacy of 8 or 9 clans, which important thile कने ना लिच्छवी, विदहंस and जंत्रिकास, ये and बाजी, ये चारिटा क्लान important थिले, जोंटा कि लिच्छवी रो कैपिटल थिला वैशाली एवं बाजी रो या ब्रिजी भी कैपिटल थिला वैशाली एंड जंत्रिका रो कुंडपुरा एंड विदहंस रो थिला मिथिला। ये चारिटा क्लान इंपोर्टेंट थिले। सो बाजी गोटे कन्फेडरेसी जोंटा कि नॉर्थ गंगा डिवीजन ऑफ तिरहुत डिवीजन, तिरहुत जगह से एरिया रे। सो पाखापाखि 8 जन 9 जन कन्फेडरेसी मिसिकी एथिरे थिले। वैशाली जोंटा कि मॉडर्न बसार इन नॉर्थ बिहार। किंग थिले किए चेतक, ब्रदर ऑफ त्रिशला, एवं त्रिशला किए जे कि महावीर मदर and father of Chalena, that is wife of Magadha king Bimbisara. Mahavira belongs to the Jantrika clan. This Jantrika clan, जोंटा कि कुंडपुरा कुंडलबन कहा जाए। The Vaji were defeated and assimilated in the Magadha empire by Ajatasatru. Okay, Ajatasatru बाजी को हरेला एवं समुक्त को मिसेनेला। अजातशत्रु बेसिकली हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी रो बेसिकली ग्रेट रूलर थिले बिंबिसार। बिंबिसार रो फाउंडर थिले हरियंका डायनेस्टी एवं अजातशत्रु तार पुओ थिले, बाप को बंदी करिके मारिकी निजे राजा हला। देन मल्ला कुशिनारा एंड पावा। कुशिनारा एंड पावा, कुशिनारा तांगर कैपिटल जदी कहइबो पावा, पावापुरी कह जाए। सो कुशिनारा एंड पावा आर वेरी इंपोर्टेंट in the history of Buddhism. Since Buddha took his last meal and was taken ill at Pava and went to his Mahaparinirvana at Kushinara. Went to his Mahaparinirvana at Kushinara. Cheti or Chedi, the eastern part of Bundelkhand in central India, joined Suktimati or Suti Batti Nagara. सूती बती नागर। बेसिकली किंग थिले किए शिशुपाल, ये थिले छेती यार छेदी, छेती या छेदी जोंटे कहउची बुंदेलखंड रीजन। अकॉर्डिंग टू सर्टेन पुराण ही इज कंसीडर्ड एज एन एली ऑफ जरासंध ऑफ मगध एंड दुर्योधन ऑफ कुरु। ही वाज राइवल ऑफ वासुदेव कृष्ण एंड हु वाज हिज अंकल सन। ही वाज किल्ड बाय वासुदेव कृष्ण ड्यूरिंग द राजस्व सैक्रिफाइसेस ऑफ पांड्या किंग युधिष्ठिर। युधिष्ठिर राजस्व सैक्रिफाइस समय तांको मार दिया हितला काको शिशुपाल। देन वत्स on the bank of river Yamuna. Vatsa was known for the fine cotton textile. Kaushambi at the confluence of the Ganga and Yamuna near Allahabad. King Udayana or Udayana was the hero of the 3 Sanskrit drama जोंटा कि स्वप्न वंशदत्ता ऑफ आशा, प्रियदर्शिका, रत्नावली ऑफ हर्षा, ये सब आम आगो को भी देखा पोस्ट गुप्ता समय। दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तुम उडयन संस्कृत ड्रामार हीरो थिले। देन लीजेंड रिकाउंट्स ए राइवलरी
rivalry between Udayana and Pradyuta of Avanti, and refer to a love between Udayana and Basava Datta, that is Pradyutar daughter. So ये थिला तुम्हारा वत्स, देन छेती एंड छेदी, देन वाजी देखिले, मल्ला देखिले, अंग, काशी, कोसाला देखिले, ये सब आमे देखिले. नेक्स्ट देखिबा आमे तुम्हारा कुरु. कुरु है वेस्टर्न यूपी इंद्रप्रस्थ रीजन रे, एंड द एपिक पोएम द महाभारत टेल्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ रेनिंग कुरु क्लान. कुरु क्लान भितर जो तांकर कॉन्फ्लिक्ट सेटा को मध्य देखाइतला. पंचला यूपी रे, वेस्टर्न यूपी रे पंचला जोटे कि गंगा रिवर अच्छी डिवाइडेड इनटू स्टेट्स इनटू टू पार्ट्स. गोटे हला नॉर्दर्न पार्ट कैपिटल थिला अहिछत्रपुर, जो मॉडर्न बरेली यूपी, एंड साउदर्न पार्ट जोटा कि कैपिटल थिला काम्पिलिया, जोटा कि मॉडर्न फारुखाबाद यूपी रे. The famous city of Kannauj was situated in the kingdom of Panchal. Famous city of Kannauj was situated in the ये वेरी इंपोर्टेंट. कन्नौज आगे को देखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले करे. ओके, नेक्स्ट देखिबा हमें मत्स्य. मत्स्य ऑफ जयपुर, अलवर एंड भरतपुर ऑफ राजस्थान. भरतनगर दैट इज मॉडर्न भैरत तांकर कैपिटल. फाउंडर थिले वीरत, सेथि पई ताको वीरतनगर को आ जाउतला. देन सोरसेना या सोरोरेना, सोरोसेना को आ जाए मथुरा ऑन द बैक ऑफ रिवर यमुना. किंग थिले अवंतीपुर, डिसाइपल ऑफ बुद्ध थिले अवंतीपुर. Then Avanti, central Malwa region re, divided by the north of Vindhyas and Avanti Ujjain, and south Avanti Mahismati. King thile Pradyuta, father-in-law of Udayana. Udayana father thile Pradyuta, she king thile. Then Gandhara, Gandhara la modern Peshawar and Rawalpindi Pakistan re, and the Kashmir Valley मिसेगी अछि Gandhara. तक्षशिला तार कैपिटल थिला, मेजर सेंटर फॉर ट्रेड एंड लर्निंग थिला. किंग किले थिले पुष्करसरीन, had a cordial relation with Magadha and waged a successful war against Avanti. अवंत से तो ये लड़ी थिले गांधारा. and the Behistan inscription, the Behistan inscription of the Achaemenid emperor Darius mention that Gandhara was conquered by the Persians in later part of 6th century BC रे तांको कैप्चर करने थिले. देन कंबोजा जोटे राजौरी, हजरा कश्मीर रे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. तार कैपिटल थिला पूंछ. पूंछ डिस्ट्रिक्ट एबे भी पाइबो, इंडिया रे किछि पार्ट भी पाइबो. कंबोजा वर फेमस इन एंशिएंट टाइम्स फॉर देयर एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस एंड एज ए रिमार्केबल हॉर्समैन लोकेटेड इन उत्तर पथा एंड नॉर्थ. सेथि में हॉर्स रे से लड़ाई करिया आसथंती. देखिबो मेडिएवल समय रे भी जते लड़ाई वगैरह हुए ए रीजन रो हेकी आसथंती. देन Ashoka या Ashoka जोटे कि पोटाली, located on the banks of the Godavari river, between river Godavari and Manjira. Modern Budhan district, Nizamabad, and parts of Adilabad. So it was only Mahajanapadas situated on the south of Vindhya. This is very important, and was Dakshinapatha, was in Dakshinapatha. Magadha जोटे कि मॉडर्न पटना, जोटे कि से मौर्यन एम्पायर वगैरह. राजगृह और राजा हरियंका डायनेस्टी तांकर फाउंडर थिले जोटे कि बिंबिसार जी की फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी कह. बिंबिसार. ओके,
यदि पर्यंत समस्ते क्लियर 16टा महाजनपदस ट्राई टू रिमेंबर मु समस्त जीएसटी दे देली तार कैपिटल तांगर केटी कोन देखो आशका पोटाली ये ओनली जोंटे की बिंधिया रो सातपुरा रो साउथ रे अछि बाकी सब नॉर्थ रे छेदी अवंती मत्स्य वत्स्य सुरसेना मगधा अंग ब्रिजी काशी मल्ला कोसला पंचला कुरु गांधार एंड कंबोजा these are all part of this. Okay, I hope these are clear. So it should be noted that most powerful state या भीतर के थिले मगध कोसला वत्स्य अवंती and two other जोंटे की बाजी एंड मल्ला ये बेसिकली पावरफुल थिले. गणसंघ माने एसएमए गण those who claim to be equal status were the alternative polity to the kingdoms. So unlike kingdoms where they had a single hereditary monarch, the Gana Sangha had a government by assembly, and within this assembly too they had an oligarchy. So emergence of Mahajanapadas from Janapadas. Emergence of Mahajanapadas from Janapadas. So Janapadas were the major kingdom of Vedic India. During that period, Aryan were the most powerful tribes and called Janas. This gave rise to the term Janapadas, and where Jana means people and Pada means foot. Okay, so by 6th century BC, the approximately 22 different Janapadas, like socio-economic development ho, या due to iron tools agriculture use हवा productivity बढ़िला and iron tool को use करी पाले military रे then religious and political development हो ये सब give rise to the Jana becomes Mahajanapadas, the Jana becomes Janapadas, and this Janapadas becomes Mahajanapadas रे convert हे गला. So people gained strong allegiance with their territory or Janapada, and they belongs to rather than tribes or Jana they are. So this period also known as the era of second urbanization. First जोंटे के Harappan civilization and एटा second urbanization मध्य कहा जाए. Okay, ये 16 महाजनपद ये लोकेशन आई होप तो माइंड रो प्रिंट कर दियो, पूरा प्रिंट कर दियो. एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट रे अंग, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट रहला कंबुजा, एक्सट्रीम साउथ रहला अशोका एंड एक्सट्रीम नॉर्थ रे भी कंबुजा. ओके, very good. So these are the list of 16 Mahajanpada. Already we have discussed काशी, कोसला, अंग, मगध, बाजी, मल्ला, छेदी और छेती, बत्सा, कुरु, पंचला, मत्स्य, सुरसेना, अशोका, अवंती, गांधार एंड कंबुजा ये सब पाई परिबे. These are the map. पिक्चराइज माइंड रखर एवं ताको मन रख. नेक्स्ट देखिवा द ग्रेट एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर. This is Tamaralipti, Port Bagara, Magadha. This is Magadha area, and this Magadha basically spread ହେଇକି ଦେଖ तार मगध एम्पायर या मौर्यन एम्पायर देख एते बड़ मौर्यन एम्पायर सही समय थिला. दिस इज द लार्जेस्ट टिल नाउ. ये अशोकार स्तूपा हो ये हो ये देखियो सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर. So literary sources of Mauryan Empire and archaeological of Mauryan Empire. Okay, so
कौन इनफॉरमेशन लिटरेरी सोर्सेस देखिए इंडिका मेगास्थेनिस लिखिथिले कौटिल्यर अर्थशास्त्र लिखिथिले विशाखा दत्त लिखिथिले मुद्रा राक्षस धर्मशास्त्र टेक्स्ट पुराणास बुद्धिस्ट टेक्स्ट जोंटे जातक स्टोरी हो देववंश दीपवंश सॉरी दीपवंश महावंश एंड दिव्य वंदना ये सब इनफॉरमेशन आमे पाइथिले मौर्यन एज रो देन पंच मार्क कॉइन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एनबीपीडब्ल्यू wooden palaces of Chandragupta Maurya in Patliputra and Ashokan inscription and edicts are the most important sources of the Mauryan Empire. Mauryan ro तुम बेसिकली देखिबो अर्थशास्त्र very important sources जोटा Mauryan Empire रो विषय जानि पाले एवं written by the prime minister कोई पारो या chief minister कोई पारो चंद्रगुप्ता सॉरी चाणक्य और विष्णुगुप्ता या कौटिल्य भी मध्य तांको कोहा जाए चाणक्य और विष्णुगुप्ता और कौटिल्य। So a books lost to Hisarchi until the copy of it written on palm leaves was rediscovered in India in 1905 by R. Samashastri. This edition is dated to approximately 250 Christian era, many centuries after the time of Kautilya, but it is generally accepted that the main ideas is in this book are largely Kautilya himself. Largely Kautilya himself. Then देखिबा Megasthenes Indica very important sources. Court of Chandragupta Maurya रे या उपरे सी आसीथिले मेगास्थेनिस ग्रीक एम्बेसडर सेलुकस निकेटर राजा थिले बैक्टेरिया राजा सी पठेथिले एम्बेसडर को मेगास्थेनिस को सी चंद्रगुप्त मौर्य रे पाखापाखि 5 वर्ष खंडे रहिथिले पाटलिपुत्र रे सी रही की गला परे किछि इनफॉरमेशन देइथिले सेही बुक्स प्रेजेंट फॉर्म तो नाही बट किछि इनफॉरमेशन हमें पाइलु देन प्रिजर्व इन लेटर ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स ऑफ Diodorus historian who describe Alexander invasion in India and provide general description of India. Strabo लिखिथिले geographer whose books deals with geography of India and Persia. Similarly, Pliny, the Roman scholar, who cites Megasthenes a observation, and Arrian, the statesman and soldier, who provides us with an account of Alexander's campaign, and also Admiral Nearchus voyage back to Babylon. So these are सब information आमे पाइचु so Indica describe the subcontinent. Indica describes the subcontinent in terms of its size, shape. India is a quadrilateral shaped country bound by the ocean of on the southern and the eastern side. Soil, climate, river, plants, animals contain lengthy description of elephants, horses, monkey, as it appears that Greeks were specifically captivated by Indian's animal. Okay, Indian animal से पूरा स्तब्ध ही देखतांती. So एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी लीजेंड एंड फोकलोर ये सब इंडिका रे भीतर सब डिस्क्राइब कराई छि केमिति माटी थिला केमिति पक्षु पक्षी ये सब विषय रे एथरे एक्सप्लेन कराई छि. ग्रीक रेफर टू इंडियंस वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड एड्रेस्ड हिम Dionysus एंड हरक्युलस या हरकुलेस मध्य इंडियन लॉर्ड कृष्ण को कहा जाउथला. दे पोर्ट्रेड इंडियंस एज ए ऑनेस्ट since theft was rare and having great character and moral values India मानकर थिल. great character and moral values India मानकु से माने बहुत प्रशंसा करिसथि. So chronology 322 ru 298 Chandragupta, 298 ru 272 Bindusara, 268 ru 232 Ashoka, 232 ru 224 Dasharatha, 224 ru 15 Samprati, 215 ru
202 सलीसुखा 202 ରୁ ଦେବବର୍ମନ 195 195 187 ଶତାଧବନ एंड दशरथ हेले 87 ରୁ 80 एटा टिके कंट्रोवर्सी अछि बट 185 186 रे बेसिकली ये कंप्लीट हो जाइए. सो द मौर्यन एम्पायर बेसिकली द मौर्यन एम्पायर वाज जियोग्राफिकली एक्सटेंसिव iron age historical power based in Magadha and founded by Chandragupta Maurya, which dominated the Indian subcontinent between 322 to 185 before Christianity. Comprising the majority of South Asia, the Mauryan Empire was centralized by the conquest of the Indo-Gangetic plains, and its capital city was located at Patliputra, जोटा कि modern Patna. The empire was largest political entity. The empire was largest political entity that has ever existed in the Indian subcontinent. The extending over 5 million square kilometers. This is very very important. Yeah, 5 million square kilometer or 1.3 million square mile at its zenith under Ashoka. So 5 million square kilometer. एबे हमारे प्रेजेंट इंडिया जोटा देखियो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सो देखियो यदि एबे इंडिया ठू भी बहुत बड़ ये एरिया. फर्स्ट देखिए तांकर फाउंडर चंद्रगुप्ता मौर्य. सो चंद्रगुप्ता मौर्य या परिशिष्ट पर्वण रिटेन बाय हेमचंद्र आइडेंटिफाई परिशिष्ट पर्वण लिखिथिले हेमचंद्र. से सेइथरे लिखिथिले चंद्रगुप्ता मौर्य एज ग्रांडसन ऑफ चीफ ऑफ पिकक टेमर क्लान. सेटा के मौर्य पिकक माने मौर्य और पुषाकस. सो he was the chief architect of Mauryan Empire and built a vast empire which included Bihar, Nepal, western and northwestern India and the Deccan. The war with Seleucus, the Mauryans annexed several areas in the Hindu Kush region in 305 BC. These regions were governed by satraps, governor appointed by Alexander during his campaign. Okay, Seleucus, Nicator. This move promoted Seleucus to campaign against Chandragupta to secure the eastern border of his empire. The treaty with Seleucus Nicator 303 रहला. So according to the term of his treaty, Seleucus ceded Chandragupta the territories of Arachosia, the Kandahar and area of Southeast Asia, Afghanistan, Gedrosia, South Baluchistan, and Parampo Misadai, the area between Afghanistan and India subcontinent. So alongside the treaty, the general rights of intermarriage between the Greeks and the Indians were also acknowledged. बाहागर हो परिबो. So Greek historian Megasthenes and Dionysius resided of the Mauryan court. So Megasthenes भी थिले and Dionysius थिले court रे. Religion, Chandragupta gave up his throne and became a disciple of Jain teacher Bhadrabahu, and Bhadrabahu सहित श्रवण बेलागड़ा रे से जाइकी Jain center रे जोटे की स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एंड सन ऑफ ऋषभनाथ इन कोएत्सारा मुद्रा रे कोएत्सारगा मुद्रा रे सिचुएटेड हियर बाहुबली जोटे कह जायथला. श्रवण बेलागड़ा रे ये सलेखाना प्रैक्टिस करी डेथ हेतिले. सलेखाना प्रैक्टिस थ्रू स्टारवेशन जे कि जैना प्रैक्टिस थाए सेटा से प्रैक्टिस करथिले. किए चंद्रगुप्ता मौर्य. Bindusara requested Antiochus to send him. Bindusara requested Antiochus send him some sweet wine, dried figs, and a sophist, a philosopher.
The last being not meant for export was not sent. Tibetan Buddhist monk Taranath, Tibetan Buddhist monk Taranath, he described Bindusara as the conqueror of the land between two seas, that is Peninsula India. ये conquer करथिले बोली. Then Divya Vandana, say Buddhist biographical narratives of Mauryan kings. ସେଇଥିରେ mention ହେଇଛି କ'ଣ ନା revolted Takshila being suppressed by Ashoka and his son of Bindusara, who was Kumara, ସେଇ ସମୟରେ viceroy ଥିଲା of Ujjain at that time. तो कश्मीर भी से जाइकी लड़ाई करथिले एवं जीतिथिला. सो ये सब इनफॉरमेशन आमे पाइलु. देन देखिबा अशोका. Next, कौन देखिए अशोका. So during his father's reign, he was appointed a viceroy of Takshila and Ujjain. एटा मन रखिबो, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी या रिलेटेड यूपीएससी रे आसीथिला. ए रिलेटेड लिंक रे तुमर यूपीएससी रे क्वेश्चंस आसीथिला. He was the first ruler to maintain direct contact with his people through his inscription. Names of Ashoka: Buddha Sakya and Ashoka in Maski edict, and Dharma Ashoka Sarnath inscription, and Devanampriya meaning beloved of the gods, and Priyadasi given in the Sri Lankan Buddhist chronicles Dibvamsa and Mahavamsa. So Kalinga war fought between Ashoka and the state of Kalinga. ये तुम्हारा पाइबो Kalinga war. So these are basically very important. Ashoka name कौन ना बुद्धा शक्य and Ashoka मास्की रे पाइबो. धर्मा अशोका सारनाथ inscription पाइबो. देवनामप्रिया meaning beloved of the gods, and Priyadasi given in Sri Lanka Buddhist chronicles Dipavamsa and Mahavamsa. And Kalinga war विषय Ashoka रो 13 major. So reason for invading Kalinga. Kalinga was glorious and basically prosperous region that valued freedom and was talented in art. So Kalinga are some important ports as well as strong navy. So after witnessing so much loss of life during the war, Ashoka abandoned violence and established peace and harmony in his kingdom. Religion. The proponent of Buddhism organized third Buddhist council at Patliputra. Buddhism proponent Ashoka. Dhamma, the word Dhamma is in Prakrit form, and in Sanskrit form it is Dharma. The Ashokan edicts were written in primarily to explain the people about the thought of the empire and the principle of Dhamma. Ashoka's Dhamma was not specific religious belief or practice. कौन सी specific धर्म को नहीं कि ये धम्मा नुआ बेसिकली किछि किछि कोंती कि नुआ धर्म करिया पे चाहुतले अशोका, बट सेमिति नुए से काहा को फोर्स कर नथिले कि तुमे एई धर्म को एक्सेप्ट करो. So it covered the entire Indian subcontinent except for part of present day Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. The Mauryan Empire capital was Patliputra in Magadha, present day Patna, with provincial capital at Takshila and Ujjain. So Mauryan Empire capital कौन थिला? Patliputra. Then provincial capital Takshila Ujjain थिला. So Ashoka used Kalinga to project power over large region of building fortification and secure its possession. लड़ाई करेगी. Then देखो इतोसाली ये region को capture करने ले अशोका. दशरथ आसिले अशोका परे 232 BC रो 224 BC. He was the last ruler of Mauryan dynasty to have issued imperial inscription. Several territories of the empire broke away during his region. Religion थिला सही समय religious and social practice of Ashoka continue होतिला. Then Samprati 224 BC ru 215 BC. Samprati ruled both from Patliputra and Ujjain. So according to Jain text Parishta Parvana, he recounted
reconquered the provinces of Saurashtra, Maharashtra and Andhra and Mysore. Reconquer करते नहीं जाइए से माने which were disintegrated after Ashoka death. Ashoka death पर ये सब सौराष्ट्र वगैरह रीजन सब disintegrate जे जरा अलगा है कि पड़े गले feudal lords थिले तो से माने धीरे धीरे अलगा है कि पड़े गले. So contribution to Jainism, he was regarded as the patronage for his patronage and effort to spread Jainism in East India. He made it possible for monks to travel barbarian lands, and he was the disciple of Swahasti Suriji. Sampriti was mentioned in Kalpasutra Bhashya as making Andhra, Dravida, Maharashtra and Kurg safe for Jaina monks. Then Saila Sukta of 215-202, he was mentioned in the Gargi Samhita Yuga Purana section as a quarrelsome, unrighteous ruler. Deva Barman 202-195. So according to Purana, he was Saila Sukta successor and मात्र 7 वर्ष से शासन करथिले. Then Satadhavan जोटा कि according to Purana, Satadhavan succeeded by Devavarman Maurya. So empire lost some of its territory because of invasion from outside and neighboring kingdom during his region. Then last ruler thile Brihadratha hale basically last Mauryan ruler. According to some sources, he was assassinated by his Brahman commander in chief Pushyamitra Sunga, who went to establish Sunga empire. या परे Sunga empire establish हला post Mauryan phases basically start हला. देन अशोकार धामा देखियो. अशोका धामा या धर्म ये बेसिकली मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एटा को जाउतला. Four cardinal points of dhamma, very important. कौन? Tolerance, non-violence, good conduct and welfare. Tolerance, non-violence, good conduct and well. Obeying parents and elders, respecting Brahmans and monks, and welfare. New officers called Dhamma Mahamatras. Dhamma Mahamatras या Dhamma Mahatma was appointed for promotion of Dhamma. Dhamma को spread करिया पाई गड़ ऑफिसर थिला. Then Sangha Mitra जाकर झियो से पठे थिले ताम्रपाणी to very Sri Lanka for conversion of women in Sri Lanka to Buddhism. Ashoka Dhamma cannot be regarded as a sectarian faith. His teachings were intended to maintain its existing order on the basis of tolerance. समस्ते समस्त को tolerate करंतु, समस्त समस्त को मानी की चलंतु. Then Ashokan edicts, they are the most important source of history of Mauryan period. Depending upon the size, they categorize as follow: major rock edict, minor rock edict, 16 and 2, major rock edict and major and minor pillar edict, 17 and 3. So these are reported from places like Mirod, Tupara, Kosambi, Sanchi, Sarnath, Lauria, Nandagad, Lauria, Nararaj, Rampur, Lumbini, and around the Ganga Valley. So the national emblem of India is taken from the Ashokan Sarnath pillar. So अशोकार नाम काण जो कोठु जानले देवनाम प्रियदर्शी ये बेसिकली माइनर रॉकेट को जानले. He was first king to speak people directly through inscription. ए बला केही कांटेक्ट करन थिला. This is remarkable development. ये सेति में अशोका हमें द ग्रेट को माने तार किछि रीजन थिबो, बिना रीजन रे हमें कहिबु नाही. And Ashoka mainly is inscribed in Prakrit language and Brahmi script. Speak to the people directly through inscription, Prakrit language and Brahmi script. The inscription from Mansehra and Shahbazgadi in Pakistan were Prakrit language but in Kharosthi script.
नॉर्मली सब इनस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज थाए आ ब्राह्मी स्क्रिप्ट एटा टिके खारती स्क्रिप्ट अछि काहे कि एटा पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन से चलता कांधार इनस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल थाए सो इट इज यूज ग्रीक एंड आरामिक लैंग्वेज एंड इन स्क्रिप्ट सो की ऑफिसर यांकर कोन थे पन्याध्यक्ष पन्या सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स whose duty was to fix the price of goods, very important post. Then samstadhaksha basically look after the markets and check the unfair practice of the traders. Then pautavadaksha basically superintendent of ways and measures. Navadaksha that facilitated states boots for transport and helped regulate rival transport and collect ferry charges. Suladhaksha basically superintendent of tools and Akaradhaksha basically superintendent of mines. Key officer then Mauryan administration देखिए Mauryan empire was divided into 5 provinces. गोटे ला उत्तर पथा, गोटे ला अवंती पथा, प्राच्य पथा, दक्षिण पथा एंड मगधा. पांचटा कैपिटल थिला ए पांचटा provinces थिला. Maurya empire had a huge army and had maintained navy. Central administration देखिए the king was the nucleus and was assisted by मंत्री परिषद, युवराज, पुरोहित, सेनापति and others. Highest officers were called tirhat and adhyakshas. Basically superintendent adhyaksha को जाए managed 26 department. Highest officer tirtha and adhyaksha. So important official मंत्री एला chief minister, मंत्री एला chief ministers. A मंत्री परिषद अध्यक्ष basically head of the council minister, पुरोहित chief priest, सेनापति commander in chief, युवराज crown prince, समहर्ता revenue officer, सुलदक्ष officer in charge of royal income, spies gauda purusha and spies basically, and informer basically prativedakas played an important role in his administration. These are very important part. So Ashokan inscription ame देखियो this inscription basically first tangible evidence of Buddhism madhya. So Ashoka inscription तीन प्रकार होटल pillar edict, major rock edict and minor rock edict. Pillar edict basically 7 type of pillar edict. The 2 type stone use करा है जी होटल spotted white sandstone मथुरारू and buff color sandstone and quartzite from Amaravati. All the pillar are monoliths carved out of from the stone. They have been found from different places like Kandahar, Afghanistan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, Delhi, Vaishali, Champaran, Bihar, Sarnath and Allahabad, Uttar Pradesh, Amaravati, Andhra Pradesh and Sanchi, Madhya Pradesh. The fragments of the same edicts are found in different places. Many pillars are high, as high 50 feet high and weigh as much as 50 tons. So the pillar depicts the animals such as elephant, lion, whales and lotus, which are all significant symbols of Buddhism. This is the pillar. Edicts, major rock edicts basically 14 पाइबो and 8 places रे माने 8 places रो सब गुडा 8 places रो कंप्लीट अछि बाकी अलगा places रे मध्य पाइबो. So major activity 1 कोन कहूची ना prohibits animal slaughter and bans festive gathering. 2 कोन कहूची ना care for man and animal, mention the Pandyas, Satpuras and Kerala Putras of the sound. Major activity 3 हला generosity to Brahmins about Yukta, Pradesikas, Rajukas, who would go every 5 years to different part of his empire to spread Dhamma. Major occurred 4 Dhamma Ghosha, sound of Dhamma, righteousness over very Ghosha, sound of war. Then से देखिए भाई war किछ लाभ नहीं तुम धर्म थ्रो रे आ सत्य थ्रो रे तुम चलो तो सेटा important. Major occurred 5 हला about Dhamma Mahatmatras, talks about treating slaves rights. Similarly, major occurred 6 basically the king's desire to know about his people condition and about welfare measure. ये लो सरकार को जानिया जरूरी से इतने इतना मेंशन है. 7 tolerance of all religion. जे basically इतने बड़ा जिनसे इट लेखा ही जी. एबे भी हमें tolerance को था discussion करूँ चु. Major occurred तुम्हारा 8 Ashoka first visit to Bodh Gaya and the Bodhi tree, first sermon, first dharma jatra.
मेजोरिटी 9 comments popular ceremony को condemns कराई and majority 10 disapprove of the individual's desire for fame and glory and stressed on dhamma. So majority 11, 12, 13 and 14 last चार्टा elaborate dhamma ऊपर elaborate करची 11 रे 12 रे कौन tolerance of all religion and sects 13 एला mention victory of Kalinga mention Ashoka's dhamma victory over Greek kings Antiochus of Syria एमित्य को polemy of Egypt and Magas of Cyrene and Antigonus of Macedonia. So Alexander of Epirus also mention Pandya, Chola and etc. Major occupied 14 engraving of the inscription installed in various part of the country. Okay, so major 1 to 30 जो अशोकार 4 प्लेसेस नाम मिलता गोटे मास्की ब्रह्मगिरी कर्नाटक रे गुजरात एमपी एंड नेतुर है आंध्र प्रदेश. लैंग्वेज यूज कौन करथांती आमे तो ऑलरेडी डिस्कशन कर सलुनी ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर जोटे मगधी लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज कराउथला मगधी जोटे की प्राकृत डायलेक्ट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर प्राकृत इन खारस्ती स्क्रिप्ट यूज मेजर ऑक्यूड 13 कंटेनिंग द एग्जैक्ट ग्रीक एंड आरामिक एज वेल ये सब इनफॉरमेशन पचारछि. आमे वर्तमान देखिबा नेक्स्ट टॉपिक हैला कोन ना पोस्ट मौर्यन पीरियड. सो नेक्स्ट टॉपिक हमरो पोस्ट मौर्यन एज. पोस्ट मौर्यन आमे मौर्यन सरलु पोस्ट मौर्यन एज देखिबा 200 बीसी रु 300 एडी देन आमे गुप्ता एज एंड पोस्ट गुप्ता एज देन एंशिएंट हिस्ट्री आपनकर कंप्लीट हे जिवो. सो पोस्ट मौर्यन एज बेसिकली देखिबा मौर्यन एज परे that is Maurya after death of Ashoka slowly and steadily the empire is disintegrated and at the same time so many invasion took place. Let's say Indo-greeks, Sakas, Kushanas, Parthians, they are started invading India, and for the first time in the history after Alexander, you can say Alexander though not clearly invade India but some western part of India, but after Alexander any European which came to India is Indo-greeks, Sakas and Kushanas. हमें देखिए not European basically foreign invasion देखिए. So this period witnessed the clash and the rise and fall of number of smaller kingdoms. The native dynasty like Shunga dynasty, Satvana and Kanvas ruled in eastern India, central India and Deccan region. So the foreigners like Indo-greeks or Bactrians, Sakas and Parthians and the Kushanas ruled in northwestern India. Okay, so foreigners को माने जोटा की कहली Indo-greeks, बैक्टीरिया जो मन को आ जाए साकास, पार्थियंस, कुशानास ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रो आसिले. सो इनफॉरमेशन कोंटू पाइले इनस्क्रिप्शन कॉइन जो थे रूलर रो ना लिटरेरी टेक्स्ट जोटा की सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन आमे सही समय देथिला. पुराण रु धर्मशास्त्र मनुस्मृति जोटा की मानव धर्मशास्त्र नोन एज मानव धर्मशास्त्र इज कंपोज्ड बाय सेज मानु and is first detailed law book मध्ये एटा को कहा जाए मनुस्मृति. So Gargi Samhita and Mahabhashya of Patanjali which commentary of Panini's Ashtadhyayi ये सब आपण पाई जिवे. So the Buddhist Jataka, Divya Bandana, Mahavastu and Milindapana basically Sanskrit ro Milinda Prashna ये these are all literary sources जहाँ थ्रू आम इनफॉरमेशन पाइजु इन द पोस्ट मौर्यन एज पोस्ट मौर्यन पीरियड. मालविका अग्निमित्र written by Kalidasa and Harsha Charitra written by Banabhatta also gives information regarding this places. The Periplus of Erythraean Sea written by this is also very important sources written by anonymous Greek seafarer जे समुद्र रो ट्रेडर थिला से लिखिथिला या ऊपर तो एठु भी इनफॉरमेशन पाइले. also the epigraphic records
in Kharosthi. The agriculture of Kharosthi found in large numbers in Gandhara, Central Asia, refer to different facets of India's regular contacts with these regions. मथुरा ये सब आम रीजन पाइबे बैक्टेरिया देखो बैक्टेरिया इंडोग्रीक्स बैक्टेरियन अलेक्जेंडर जोटा कि समय थिला पार्थियंस वगैरह सुंगा फर्स्ट देखिवा सुंगा सुंगा कौन ना पुष्यमित्र सुंगा जी की कमांडर इंचार्ज थे कमांडर इंचार्ज कहार लास्ट रूलर बृहद्रथ मौर्यन एम्पायर तो ये कौन कले मारदेले तांको मारदे कि निजे राजा डिक्लेयर करदेले फर्स्ट कैपिटल थिला पाटलिपुत्र एंड सेकंड कैपिटल तांकर विदिशा तांकर पुओ थिले अग्निमित्र मालविका अग्निमित्र यांकर स्टोरी उनका पुओ सही समय विदिशार भाईसरे थिले सो पुष्यमित्र सुंगा defended the country that is Gangetic Valley and its culture against foreign invasion that is Greek Pakru and Pushyamitra Sunga erected Birhut Stupa Beirut basically MP re. After Pushyamitra his son Agnimitra ruled. Kalidasa play Malvika Agnimitra is a love story of King Agnimitra and a handmaiden Malvika. Okay, handmaiden basically maid bhaliya Malvika, a significant attempt at the penetrating into India by Demetrius I of Bactria was countered successfully by Vasumitra, son of Agnimitra. Demetrius I of Bactria king से ट्राई करथिले कि इंडिया को अटैक करिवे तो सही समय मध्य ये प्रोटेक्ट करथिले के वासुमित्र समय आस्ते एटा एगुडा सब मन रखथिबो दीज आर वेरी इंपोर्टेंट okay these are very important also वासुमित्र अग्निमित्र देन अग्निमित्र समय मालविका अग्निमित्र हितला एंड मालविका थिले तांकर बेसिकली पीए कहि पारो पर्सनल असिस्टेंट ही पारे या जोंडे कि पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी बढिया थिले तांकर लव स्टोरी कथा कहैतला then he performed Ashwamedha sacrifices for revival of a Brahminical order and patronized scholars like Patanjali and Manu. After Agnimitra, Vasumitra became the king and was succeeded by 7 more kings in the same dynasty. Sunga Empire covered the region of Bihar, Bengal, UP and northern Madhya Pradesh region रे जोंटा कि बहुत कम है ये मौर्यन कंपैरिजन रे. The last ruler of Sunga dynasty was Devabhuti. He was killed by Vasudeva Kanva and started Kanva dynasty. So Sunga pare Kanva dynasty asila. So Sunga issued gold and silver coin and they inherited and continue the Maurya structure of administration. जोंटा कि मौर्य थिला जेमती सेमती से कंटिन्यू करी रखले. They patronized Brahminical order. Yet there was no antagonism towards Buddhism. किसी कहते कि एंटी बुद्धिस्ट थिला कि पुष्यमित्र सुंगा जे ब्राह्मण थिला बट सेथि पे कहते बट सेमती किछि नुह से एंटी बुद्धिस्ट न थिला. आर्ट एंड लिटरेचर रिसीव्ड तुम देखलो बेहरुत स्तूपा से बनैथिला पुष्यमित्र सुंगा तो केमती एंटी बुद्धिस्ट हे जिवो. देन आर्ट एंड लिटरेचर सही समय बहुत भलो पैटर्नेज मिलिथिला under the Sunga. Mathura school of art achieved new heights and especially in realistic human depiction. तुम्हारे देखियो सही समय माने एई पीरियड बेसिकली डेवलप हेथरा 3 स्कूल ऑफ आर्ट. गुटेला मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गुटेला गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट आ गुटेला अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. देन आउ किछि किछि परे डेवलप हेछि जोटा कि सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी मध्य परे डेवलप हेछि. ये सब इवन तुम्हारे अजंता स्कूल ऑफ आर्ट भी मध्य परे डेवलप हेछि सेटा देखि परिबे. सो द आर्ट एंड लिटरेचर बहुत सारा बहुत पैटर्न मिली सुंदर से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट स्पेसिफिकली या समय डेवलप हेछि. करे भी मथुरा और गांधारा कहबी. यवन राज्य इनस्क्रिप्शन एंड धन देवा अयोध्या इनस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट सुंगा. मानुष मानव धर्मशास्त्र
or Manusmriti and Kalidasara Malvika Agni are the said to have been composed during this period. This is very important and Pushyamitra Sunga erected. So these are basically important during Sunga dynasty. Sunga dynasty pore Sunga dynasty pore ame देखिबा Kanva dynasty. So Kanva Vasudev Kanva last king जेमिति हेइथिला पुष्यमित्र सुंगा जेमिति मारिथिला ता डायनेस्टी भी सेमिति गला. So कर्म करथिले 73 to 28 BC, Vasudev Kanva killed his king Devabhuti of Sunga and founded Kanva rule with Vidisha and Patliputra as their capital. Next came Bhumi Mitra, Vasudev's son, and Narayana, son of Bhumi Mitra. Together they ruled for 26 years. The last Kanva king Astila, Susarman, was killed by Satvahana and Andhra king, and Kanva dynasty of Brahmins ended with him. So Susarman through end hela. Then Chedi dynasty around 1st century BC, kingdom of Chedis or Cheti was founded in Kalinga. The politics of this period is known for the third Chedi king of Kalinga known as Kharvala. आमे देखिते Odisha history आमे देखिबा पढ़िबा. So Hathigumpha inscription of Udaygiri hills of Odisha describe him as a great conqueror conqueror or Magadha of Magadha, Satvahana's Pandyas of Madurai. Kharvala was a Jaina follower who donated caves to Jaina monks of Udaygiri hills. Chedi are also referred to as Cheta or Chetavangsha and Mahamegha. These are हमें जानिचे ये कलिंगा छेदी वगैरह ये सब सातवाहना ये सातवाहना सही समय सातवाहना कैपिटल थिला अमरावती एंड अमरावती सेहि पे आंध्र प्रदेश रो कैपिटल एबे रखा आइची आपण माने जानिथिबे हिस्ट्री वेरी इंपोर्टेंट जेतेबेले ये होउची Satvahana. Satvahana referred as Andhras in Puranas. Simuka was the founder of Satvahana dynasty. This is very very important. Simuka. अब आंध्र प्रदेश भी ना हमारा एठू ही स्टार्ट ही छी बुझले नहीं. So Satvahana are reported from northwestern region of Deccan in the 1st century BC. Primary capital था प्रतिष्ठान जोंटे कि modern Python in Maharashtra. Then on the Godavari river and second capital जोंटे कि अमरावती. So information about history of Satvahana obtained from Aitareya Brahmana, Purana, epics, Brihat Katha of Gundya,
गुणाढ्य एंड कामसूत्र ऑफ वर्षायना ये सब आम इनफॉरमेशन पाइलु। नानाघाट इनस्क्रिप्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नानाघाट इनस्क्रिप्शन एंड नासिक इनस्क्रिप्शन, हाथीगुंफा इनस्क्रिप्शन खारवल एंड येरागढ़ इनस्क्रिप्शन अशोका प्रोवाइड इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अबाउट द सुंगा डायनेस्टी। येरागुड़ी रे अशोकांकर माइनर सॉरी मेजर ऑक्यूरेट अच्छी येरागुड़ी आंध्र प्रदेश। So the Satvana graves are reported to be encircled by big pieces of stones and therefore they are known also megalithic people. Gujarat, Malwa or conquered as per the Nasik inscription of Naini-Kat. Okay, जोंटा कि तांकर wife. ये देखा सातवाहना प्रतिष्ठान एपटे देन अमरावती एटा। ये जो डॉटेड लाइन देखुछथि दीज आर पार्ट मोटिके स्पीड पडुछि एथि पई कि सो दैट तुमे जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज करके एग्जाम को जाई परिबो सेटा काम रे आसीबो। So next important king was Gautamiputra Satkarni, whose achievement are recorded in Nasik inscription of Gautami Balasri, his mother. So Gautamiputra Satkarni, also known as �絵𝐏𝐻, defeated Sakas, Greeks, Parthians, and Nahapana, that is king of western Satrapas. And Gautamiputra Satkarni was a great and a real founder, a real basically great ruler of this dynasty and real founder भी माने माजे 150 CE Rudradaman took advantage of weak successor of Gautamiputra Satkarni and defeated them. Rudradaman हरेला. So at the end of 2nd century Christian era, another important ruler thile कौन Yagnasut Alakarni came to the throne, who conquered back the area of Gujarat, Malawa and Andhras. After Alakarni, Satvana power declined and they were replaced by Vakataka dynasty in the same region. That is, the two were Brahmins. Then these are basically tomorrow Satvana kings. Satvana pore ame dekhiba Indo-greeks. Indo-greeks basically 200 to 100 common era CE या AD जोटा कि आपण कहि परिबे। So Indo-Greeks were the Greek people who got settled in India and become localized over a period of time. Indo-Greek rule in India had 3 branches, namely Bactria, that is North Afghanistan, Takshila, and Sakal or Sialkot, which is now in Pakistan. Tinta branch thila, very very important. North Afghanistan Takshila, sorry North Afghanistan जो टाना Bactria, Takshila जोंटे के हमारा Takshila Kashmir and Sialkot जोंटे के पाकिस्तान रे। An ambassador from the Takshila branches, Heliodorus, was sent to court of King Vidisha. Heliodorus आस्ते Takshila branch रू Vidisha. Heliodorus got stone pillar constructed in Greek style, that is different from Ashoka style, which was dedicated to Lord Vasudeva. So Demetrius and Maninder, that is Milinda कहे जाए, Demetrius and Maninder or Milinda were 2 significant rulers जोंटे की mention from Sakal or Sialkot branches of Indo-Greeks. 2 important rulers mention है। Maninder or Milinda 165 BC to 145 BC adopted Buddhism under Nagasen. Nagasen जे कि मिलिंद पान लिखिथिले। मिलिंद पान माने बेसिकली मिलिंद गोटे बुक जोटा कि ग्रेट हिस्ट्री ऑफ दिस एज। मिलिंद आउ नागसेन भितर जो स्टोरी जो डिस्कशन जो डिबेट ता उपरे थिला। इंडो-ग्रीक्स period 130 BC to 80 BC. Capital Takshila and Sialkot. At the beginning of 2nd century BC, the Indo-Greeks were first to invade India. They introduced practice of governorship and the use of curtains in India. They patronized both Buddhism and Hinduism.
The Magadhira inscription the near Mathura gives an account of the Indo-greeks rule. Magadhira inscription रे ये तुम्हारा details देइची Indo-greeks rule विषय. Then exquisite coin system यहाँ के समय बहुत important coin system थिला. ये गोटे पिक्चर देला हमकू कि केमती कॉइन मिंट होतला को स्टाइल को मेटल यूज करथुले को वाला ट्रेडिंग होतला को सही समय राजांकर ना कोन थिला सेइथरे भी कॉइन रो राजांकर मूर्ति थिला ना थिला भगवानकर मूर्ति थिला. दे आर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स. सेइथरे इमेज ऑफ किंग्स थिला एंड गॉड रो भी मध्य इमेज थिला. वेरी इंपोर्टेंट दिस इज ओके. ग्रीक डाइटी इनिशियली यूज करथले बट धीरे धीरे से माने इंडियन डाइटीज भी यूज करिया को लागिले. इनिशियली ग्रीक यूज करथले देन तापरे इंडियन मानो को यूज करिया लागिले. द कॉइन ऑफ द ग्रीक किंग इन इंडिया वर बाइलिंगुअल था. ग्रीक किंग रो जो कॉइन था हितर बाइलिंगुअल जोटे ग्रीक फ्रंट साइड रो पाली लैंग्वेज बैक साइड रो. दे इंट्रोड्यूस हेलेनिस्टिक आर्ट टू द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द इंडिया. सो माने हेलेनिस्टिक आर्ट. सो डेमेट्रियस जे कि ग्रीको बैक्ट्रियन किंग Euthydemus basically Euthydemus one poor जे कि Demetrius invaded Afghanistan and Pakistan. Then Apollodotus and Maninder from Takshila, he sent two of his commanders, Apollodotus and Maninder, for further conquest. So Apollodotus conquered Sindh and marched up to Ujjain. Maninder extended his rule up to Mathura, and from there he attempted to capture Patliputra, but he was stopped by the army of Basumitra and the grandson of Pushymitra Sunga. And mane achi ame कहिथिले Basumitra समयरो ये फेरी देइथिला. Then Maninder very important ruler था. He was known as Milinda and capital थिला तांकर Sialkot. Rule or conquest, he ruled a large kingdom of northwest of the country. सी गंगाटिक रीजन को रेड करथिले जोटा कि विथ किंग ऑफ पांचाला और मथुरा को किंग रो साथरे नै से रेड करथिले. ही इज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागार्जुन. नागार्जुन कहि हबो तांको भीतर स्टोरी रे मिलिंद पान थिला. बहुत सारा कॉइन मिलिची जोटा कि ए रीजन रु से इशू करथिले. काबुल इंडस रिवर जोटा कि ही डिस्क्राइब एज अ किंग एंड सोटर और सेवियर इन हिज कॉइन. मिलिंद पान जोटा कि नागसेन लिखिथिले क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन ऑन द बुद्धिज्म विथ टीचर नागसेन या ऊपर थिला. देन एंटियलसिडस बेसिकली 15 ରୁ 95 he sent his emissary Heliodorus to the court of king Bhagabhadra and erected the pillar of Garuda Dvija with its capital adorned by a figure of Garuda. In honor of good God Krishna Vasudeva, this is also known as Heliodorus pillar or base Nagar period. Decline. Yavana invasion of Ayodhya, Saketa and further east into Magadha territory. The cessation of land to Sungas. Loss of Bactria to the Parthian ru हारले, Sakas ru हारले एवं internal लड़ाई जोगु ये खत्म हो गया. Then तांकर decline and rise of Parthians, Parthian and Pahalwas basically rise तो समाने आगुरु हेले नहीं but धीरे धीरे समाने अलगा region ने थिले ये अलगा region थिले. 247 to 224 AD. The Parthians ruled over the present region of Khorasan. Khorasan टा कौंठी ईरान रे. It was founded by Arsaces I of Parthia when he rebelled against the Seleucid Empire. They replaced the Sakas in northwestern India. The periplus of Erythraean Sea mane achi mu ebe कहइथिली described the present Parthian kings fighting with each other in the area of Sindh. एथरे डिस्क्राइब कराइ कि पार्थियन किंग फाइट करथला तांको भितरे सिंध रीजन जे देखिबो मु जे देखेबी एट देखो पार्थियंस किंगडम ये सब सिंध रीजन एटा.
𝐒𝐏𝐒 इनस्क्रिप्शन से मेंशन कराई कौन ना पार्थियन रूल करथले नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान दे मोस्टली फॉलोड जोरोस्ट्रियनिज्म and had a strong cultural similarity with Saka Saita. Saint Thomas is very important. This is said to have come to India for the propagation of Christianity during the reign of Gondophares. Gondophares जे कि रूल करथले इस समय रे पार्थियंस थिले. Coins of the Hindu deity Shiva have been also been found issued in the reign of Gondophares. Okay, ए रीजन ने से माने थिले Sakas. Sakas were also known as Xiaxian were from western China. The first Saka king was Mous or Moga, who is known from the inscription and series of coins. Mathura, Ujjain and Girnar were center of Saka ruler in North India. They ruled in capacity of satrapas, that is governor. Satrapa basically local रूलर बेसिकली गवर्नर या बेसिकली रीजनल पार्टी को हम सत्रप्स भी कहू एबे महाराष्ट्र एमती थिला दीजान so with control over the western Ganga valley part of central India and Gujarat, Saka were almost always at war with Satvana and put प्रेसर ऑन डेकानिज्म मु एबे कहितली रुद्रदमन कथा या पूर्वरु जेतले सातवाना पढितली ये साका किंग रुद्रदमन 130 ru 150 CE of Ujjain center of Saka is significant as he finds mention in Junagadh inscription. This inscription is in Sanskrit unlike previous Prakrit inscription thila. Indo-Asian Sakas and Satvana या को सहित बेसिकली कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट लागि थाए. Then western satrapa ए एरिया रे जते आसी जिवे. So 150 ru 400 AD capital Taxila and Mathura. They are also known as Xiaxian or belongs to Indo-Asian Central Asia या western China ru semane asthante. Rule देखियो they placed Indo-greeks in India, replace Indo-greek को हरेगी आठी replace कले एवं तांकर रूल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रे स्टार्ट कले. They are mainly of two different group. गुडेला northern देखिए बेटा northern satraps ruling from Taxila to and western satrap ruling over Maharashtra. एटा देखियो ये ला western satrap ये ला northern satrap ये दीटा satraps एठी रूल करथले साकास. So Yuga Purana mention an invasion of Patliputra by Xiaxian sometime during 1st century BC. The consecration of the Buddha relics in Stupa is mentioned in Mathura, lion capital, which is linked to several Indo-Asian kings from Mous to Rajula. Coin as the western satrapa coin bear the king head on one side and Buddhist Chaitya or Stupa on the others. Prakrit language has been found written in many scripts. Mous जे कि founder थिले Saka ruler. His son and successor Ajiswan thile, but Rudradaman was the famous Saka ruler who repaired the lake Sudarsana for the better irrigation. This is very important. And the inscription Girnar jonde Junagadh ro achi Sanskrit lekhithile mention his achievement. He issued the first ever long inscription in the chest of Sanskrit re se lekhithile. Rudradaman got Sudarsana repair for the better irrigation jonde ki चंद्रगुप्ता मौर्य को कंस्ट्रक्ट करथिले. इनिशियली स्टार्ट करथिले ये केवल रिपेयर करथिले. बहुत बड़ कथा. These are very big thing in history. Bhumak and Nahapan of Girnar center of Sakas had their coin spread over many places of western India. Huge number and great variety of silver coin are reported from western India that are attributed to the Sakas. Patronizing Indian art and culture, many of the Saka rulers got themselves Indianized. Important center of development of art were Sanchi, Mathura and Gandhara. Very important this one. जोंटे की डेवलपमेंट हेतिला. The king of Ujjain defeated Sakas and assumed the title Vikramaditya and established Vikrama Samvat or era in 58 Christian era, Vikram era. Then Kusanas,
Okay, Indo-Greek, Sakas and Kusana, they are the great ruler basically. Sei samare Kusana ya Yeachis, two were from China. They ruled in northwestern India with Puruspuria, Peshawar as their capital. Kanishka, Mahayana Buddhist was the most important Kusana ruler. देखिथिले रुएमा काडफिश, हुबिस्का, बसिस्का were other important Kusana ruler in India. The fourth Buddhist council at Kundalban, Bihar, Kashmir, with Vasumitra as president was held during Kanishka period. Ashwaghosa was vice president of this Mahayana Buddhist council. Buddha Charita, that is biography of Buddha, was composed by Ashwaghosa of Patliputra. This is also very important. देखो मु फैक्चुअल जिनस कहूची सो दैट तुमको एग्जाम ओरिएंटेड तुम प्रिपेयर करि परिबो ताकू हेल्प हबो. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेतला ये नागार्जुन propounded the madhyamika philosophy of Mahayana Buddhism. Nagarjuna also discussed the idea of relativity and hence is sometimes called Einstein of India. Nagarjuna को Einstein of India कहा जाए एवं या ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी रो आसी सारीची. एटा देखो कुषाण एम्पायर पिक्चर को माइंड रख सो दैट तुमको काम रे आसीबो. दे आर द ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब्स. पेशावर, टक्सिल एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यांको समय भलसे डेवलप होईची. ओरिजिनली बिलोंग्स टू सेंट्रल एशिया एंड दे रिप्लेस साकास एंड पहलवास. देखियो फ्रॉम ओक्सस इन द गंगा टू गंगा, फ्रॉम खोरासान इन सेंट्रल एशिया टू पाटलिपुत्र तांकर एरिया थिला. Raj Tarangini written by Kalhana mention the details rule of the Kusana king and their benevolence toward Buddhism. So many Kusana ruler also adopted the title Devaputra, that is son of God, possibly inspired by Chinese ruler who called themselves son of heaven. So Kujla Kadphish or Kadphish I, founder of a Kusana dynasty, occupied Kabul valley and issued coin with his name minting copper coins. जोंटा कि रोमान रू से माने कॉपी करिकी ये करथिले कॉपी. देन उइमा काडफिश या काडफिश 2 ये होल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ये कैप्चर करनेले अप टू मथुरा पर्यंत से गोल्ड कॉइन इशू करले. से टाइटल कॉल देले लॉर्ड ऑफ होल ऑफ वर्ल्ड उइमा काडफिश. देन तापरे आसले कनिष्का द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल टाइम इन द साकाईरा. ही फाउंड कले साकाईरा 17 AD, द मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी. ही एक्सटेंडेड हिज रूल फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ इंडिया. He patronized Buddhism and a scholar like Vasumitra and Ashwaghosa and Nagarjuna यहाँ को समय थिले patronise करथिले. Then he convened the fourth Buddhist council at Kundalban, Kashmir. Vasumitra जोंडे president थिले. It led to the division of Buddhism from Hinayana and Mahayana. He built the city of Puruspura या Peshawar capital करथिले. He was defeated by Chinese general Pancho in his first expedition to China, but later he defeated Panyang, the son of Pancho को हरेले. He sent missionary to Central Asia and China for the propagation of Buddhism and Robotok inscription relate to Kanishka genealogy with Kujala Kadphish related information. So 78 CE, the Saka era was founded by Kanishka. Ruling over the region of Silk Road, Kusana greatly benefited from the issue of gold standard coin. 22 to 23 carat. Processing the important China raw silk at Bharuch in Gujarat helped to become the important trading center. The greater use of saddle in horse riding, armor, turbans, trouser, helmet, long coats and better cavalry are Kusana's contribution. Introduced Satrapa system, the empire was divided into satraps. ये समय तांकर ये करथिले. सो लास्ट देखिबा जोंटे कि हमें देखिले मथुरा आर्ट एंड गांधार आर्ट. गांधार आर्ट बेसिकली these are heavily influenced by a Greek and Hellenistic scripture known as Indo-greeks art. Early Gandhara school as bluish grey sandstone थिला. Then धीरे धीरे ये कोन हला ना mud और स्तूप यूज हला. Mainly Buddhist image थाए and influenced by Greco-Roman जोंटे कि Pantheons, patronized by Kusana rulers, developed in northwestern frontier, जोंटे कि कांधार वगैरह region में develop हितला.
Buddha is shown as a spiritual state with wavy hair, and he wears fewer ornaments and is seated in a yogi position. The eyes are half closed as in meditation. His protrusion is shown on the head, signifying the omniscience of Buddha. Mathura art. It was developed indigenously and not influenced by external culture. The structure of Mathura school were made using spotted red stone. बुझिला सेटा टिके डिफरेंस अछि रेड स्टोन रे इंडिजिनस डेवलप ऑल द थ्री रिलीजियस एथरे पाइबो हिंदुइज्म जैनिज्म बुद्धिज्म एथरे होतला इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कुशाना रूलर्स and was developed in and around Mathura, Shonk and Konkalita. So Konkalita was a famous Jain sculpture. Buddha is shown in delighted mood with smiling face. The body symbolizes masculinity. Body thila. Tight dress pinthile, face and head are shaved kare pinda hotla. Buddha is seated in Padmasana with different mudras. His face reflects grace. A similar protuberance show in the head. So this tomorrow माने post-mauryan phases रे गला. Then आमे देखिबा tomorrow history of Gupta and post-Gupta. Then complete tomorrow section. Sorry you. So history of Gupta age, Gupta period, 300 Christian era, या common era, to 600 C. This phase is a golden age, referred to as golden age of Indian history. So देखिबा कि केमती कोन golden age हला कोन हला. So Deccan Plateau, this is Deccan Plateau, and except this area, almost all area which is similar to that of Mauryan, ये तांको पाखर अछि देखंडो पाटलिपुत्र ये एरिया छाडी देले बाकी ये गुप्ता देइछन. सो एठी देखिबा इनिशियल गुप्ता जेतले आमे देखिबा चंद्रगुप्ता 1, ये एरिया बेसिकली चंद्रगुप्ता 1 जे कि रियल फाउंडर माना जाए सी एक्सपांड करथिले. देन दिस एरिया इज एक्सपांडेड बाय समुद्रगुप्त एंड दिस एरिया चंद्रगुप्ता 2 जाकू विक्रमादित्य टाइटल दिया जाए. So the Gupta rule was witness all around the progress, that is in sphere of art, architecture, literature, science and technology, and metallurgy, philosophy, and regarded as the golden age in the ancient history. Right? Stable polity, profitable trade. कहीं ना Mauryan empire परे एत्ते बड़ा empire इंडिया रे हेन थिला है ना नहीं. The second best जदि कोई परिवो ancient time रे this empire एत्ते बड़ा stable polity हो, profitable trade हो, secured and peaceful social setup ये न थिला. This provided a conducive environment for development of North India. Right? श्री गुप्ता तांकर फर्स्ट रूलर थिले जे कि तांकर पुओ भितारी and followed by his son. भितारी पिलियन इंस्क्रिप्शन dates his reign of chronology कोई भी जोंटे कि हुना पश्चिमित्र तांकर सहित कॉन्फ्लिक्ट कोन थिले ये सब आमे देखिबा. श्री गुप्ता तांकर son हेले घटोत्कच, basically founder थिले श्री गुप्ता around 240 to 280 AD, used the title Maharaja. Son of Sri Gupta took the title of Maharaja, and Chandragupta I yanku regarded as the real founder, and this his reign started from 319 to 334 AD, and this year is referred to as Gupta era and assumed the title of Maharaja Dhiraja. ये Maharaja Dhiraja. He married to basically Lichvi princess Kumar Devi को so matrimonial alliance through रे initially she expand करथले तांगर territory. Samudragupta, the reigned from 335 AD to 380 AD, called Napoleon of India by V.H. Smith. का कहिथिले
समुद्रगुप्ता को एंड आयरिश इंडोलॉजिस्ट थिले ये वी.एस. स्मिथ एंड आर्ट हिस्ट्रियन थिले हिज कैंपेन्स और मेंशन इन ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश रे पाइबो ईरान इंस्क्रिप्शन एंड प्रयाग प्रशस्ति या अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रे रिटन बाय हरिसेना मध्य तुमे सेथरे भी पाइबो देन चंद्रगुप्ता 2 तांको परे आसिले चंद्रगुप्ता 2 चंद्रगुप्ता 1 परे आसिले चंद्रगुप्ता 2 तांकर 380 रु 300 412 चंद्र समुद्रगुप्ता हले के 335 रु 380 लॉन्गेस्ट सर्विंग कोइ परिबो जोटा कि मेजर गुप्ता रु चंद्रगुप्ता 2 बेसिकली 380 रु 412 नवरत्न 9 जेम्स इन हिज कोर्ट took the title of विक्रमादित्य then कुमारगुप्ता 1 जोटा कि 413 रु 455 एडी founded Nalanda University. He was also called शक्रादित्य तो स्कंदगुप्ता यहाँ पर आसिले कुमारगुप्ता 1 पर 413 455 455 रु 467 took the title of विक्रमादित्य again. So विक्रमादित्य टाइटल बेसिकली चंद्रगुप्ता 2 विक्रमादित्य आगे नहीं थिले तांको कोर्ट रे 9 जेम्स थिले नवरत्न थिले तो ये सब देखिबो एंड स्कंदगुप्ता जने वैष्णवी एवं कुमारगुप्ता रो पुओ थिले हुना इन्वेजन रु इस समय से प्रोटेक्ट करथिले देन विष्णुगुप्ता लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी 540 रु 550 ये लास्ट रूलर थे देन या पर सीक्वेंस अछि बट सेही बळिया नॉट ग्रेट रूलर थिले सो चंद्रगुप्ता 1 जो देखिबा गुप्ता एरा इट स्टार्ट हितला 319 टू 334 या 35 क्रिश्चियन एरा फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर वाज चंद्रगुप्ता 1 who considered actual founder of the dynasty. He assumed the title Maharaja Dhiraja. What title? Maharaja Dhiraja. His reign covered the region of South Bihar, Jharkhand, parts of eastern UP, जोटा कि सकेता and प्रयाग. His accession in about 319 to 320 marks the beginning of the Gupta Samvat era. Chandragupta 1 married the Lichvi princess Kumar Devi and increased his influence in the North Bihar region that is in Nepal. This is very important. Kumar Devi एबे हमें डिस्कशन करथिले एंड सो गोल्ड कॉइन जोटा कि सेइथरे कुमार देवी रो पिक्चर आ चंद्रगुप्ता फर्स्ट सेटा को कुमार देवी कॉइन को आउतला इशूड करा हितला सन ऑफ चंद्रगुप्ता 1 के थिले समुद्रगुप्ता बिकम द नेक्स्ट रूलर सेटा हला समुद्रगुप्ता became the next ruler whose conquests are recorded in Prayag Prashasti. These conquests Prayag Prashasti were composed by Samudragupta's court poet, a scholar and minister Harisena. जोंडा कि मु कहउथिले Prayag Prashasti. This is very important. You need to remember this. समुद्रगुप्ता रो जते सब conquest हेची mostly compose करा हेची by Harisena एवं सेटा प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लेखा है अलाहाबाद पिलर अशोकार गोटे अच्छी से समुद्रगुप्तार गोटे अच्छी क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज यूज है अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्ता कौन करचंती कंक्वर्ड 8 किंग्स ऑफ द आर्यवर्त माने नॉर्थ इंडिया गंगा वैली रीजन ओके 8 किंग को कंको हरैथिले या जीतिथिले समुद्रगुप्ता आउ कोन ना समुद्र कैप्चर्ड एंड देन लिबरेटेड द रीइंस्टेड 12 किंग्स ऑफ दक्षिण पथ माने साउथ इंडिया रो 12 जन किंग को सी रीइंस्टेड करथिले माने कोन आगे कैप्चर कले तांकू हरैला परे पुनी तांकू बसै के आसिले देख तू मते ट्राइब्यूट दबु मते टैक्स दबु मते पैसा दबु देन यू आर देयर टू हैंडल a large part of the subcontinent succumbed to the power
of Samudragupta and paid tribute. Samudragupta performed Ashwamedha Yagna sacrifice post these achievement. So he issued Ashwamedha coin. So माने से Ashwamedha sacrifices practice करते से इसमें Ashwamedha coin या tiger slayer coin. So tiger slayer coin माने coin having tiger रो फोटो थिवो. ये बिलीव करा जाए कि से ईस्ट इंडिया को मध्य कैप्चर करते कहीं ना सही समय ईस्ट इंडिया रे बेंगल टाइगर वगैरह बेंगल वगैरह रे टाइगर मिलता. देन बैटल एक्स कॉइन बीना कॉइन इन व्हिच डिस्प्लेड प्लेइंग बीना बीना बजो बजो से बसती बीना एमती बज. So Samudragupta was not only a conqueror but a great poet, musician and patron of learning. तो समुद्रगुप्ता जोटा कि टाइटल एते जो जीति चंदी तांको टाइटल देथिले वीए स्मिथ नेपोलियन ऑफ इंडिया. नेपोलियन ऑफ इंडिया. अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कॉल्ड हिम धर्म प्रचार बंधु. कॉल्ड हिम धर्म प्रचार बंधु. अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. Then Chandragupta II, 380 CE to 414 CE, son of Chandragupta I, Samudragupta, very very important. चंद्रगुप्ता टू एटा हम एक्चुअली टिके मिस ये हो जाई चंद्रगुप्ता टू. सो यांको परे आसले किए चंद्रगुप्ता टू जे कि फॉर द फर्स्ट टाइम एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. Okay. So Udayagiri cave inscription, जोड़े कि Bidsa MP and Sanchi inscription inform us about this. He married Kuber Naga of Nagad family and had a daughter by her named Prabhavati Gupta. Prabhavati Gupta was married to Vakataka king Rudrasena II. Vakataka king Rudrasena II of central India. So after Rudrasena's death, Prabhavati Gupta ruled as a regent between 390 to 410. And Vakataka जो रूल करता से एरिया को बेसिकली ये कैप्चर करला चंद्रगुप्ता II. काहे कि ता झियो रूल करता. Chandragupta II was the first Gupta ruler to issue silver coin bearing lion figure similar to pattern of Shaka coins. Mehruli iron pillar very important. जोटा कि बर्तमान दिल्ली रे कुतुब मीनार अछि of Chandragupta II records that Chandragupta II defeated Valhikas of Bactria crossing the सप्तसिंधु क्रॉस करिक जाइकी सेठी से हरैथिले बोली बालिका ऑफ बैक्टेरिया किंग ताको हरैथिले बोली कहा जाय. Kalidas and Amar Simha lived in his court. Chinese Buddhist monk Faiyan visited his court. Okay, Faiyan आस्तिले Huensang आसिबे यांको परे तापरे इत्सिंग. Faiyan, Huensang and इत्सिंग. कुमार गुप्ता I 414 रु 455. करमदंडा या फैजाबाद inscription refer to King Kumar Gupta I as ruler of 4 oceans. Mandaswar inscription as ruler of all earth and copper plate inscription of Damodarpur as Maharaja Dhiyaraj. So Kumar Gupta को कौन कहा जाएला? करम दंडा फैजाबाद इंस्क्रिप्शन रु या इंस्क्रिप्शन
याकू कुमार गुप्ता 1 कहा जाउतला एज अ फॉर रूलर ऑफ फॉर ओशन देन मांडसरी इनस्क्रिप्शन कहा जाय रूलर ऑफ ऑल अर्थ एंड कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन ऑफ दामोदरपुर याकू महाराजा धीराज सो बिलसाद जोंटे कि एटावा इनस्क्रिप्शन बिलसाद बेसिकली बर्तन यूपी रे also mention Kumar Gupta 1 and Kumar Gupta 1 performed Ashwamedha Yajna and assume the title like Ashwamedha Mahendra and Mahendra Ditya. So he himself has a devotee of Shiva. Kumar Gupta 1 issued Kartikeya type coins bearing the figure of peacock. While the threat of Hunas crossing Hindu Kush was building up during the Kumar Gupta 1, on the whole, his reign remained peaceful. So during the reign, a very important Nalanda University was established. इस समय नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश कराइता कुमार गुप्ता ने मन रखियो देन स्कंद गुप्ता 445 455 टू 467 कॉमन इरा son of Kumar Gupta 1 Skanda Gupta during his lifetime bravely fought and defeated Hunas on the northwestern frontier. His conquest over Pushyamitra is marked in Bhitari pillar inscription. Got the Sudarshan Lake repaired. It very important again Skanda Gupta. आमे साका किंग देखिथिले रुद्रदमन से सेतळे रिपेयर करथिले So Skandagupta's death in 467 Common Era was followed by incompetent successor who could not keep the empire intact. यांको परे धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेजेस आसिला 455 रु 467 and 467 परे धीरे धीरे डिक्लाइनिंग गुप्ता एम्पायर हला. So feudal lords recipients of land grants started asserting themselves and started setting up their own dynasties. Decentralized bureaucracy, absence of large permanent and professional army were important factors of decline. So decline of foreign trade, invasion of Hunas, weak successor contributed to their decline. Vishnugupta 540 to 550 was the last recognized Gupta ruler. Okay, so यही कंपेयर करवा देख मौर्यन डायनेस्टी केते बड़ एम्पायर मौर्यन डायनेस्टी एठू ये एरिया हला बेसिकली मौर्य गुप्ता एरिया अंडर नथिला देन आउरी टिके सेपट को मौर्य जाइथिले सेते एरिया तो गुप्ता रो अधा मौर्य रो अधा कहले चलिबो गुप्ता Okay, so socio-economic condition during Gupta period. So administration देखिए king was assisted by council of minister. Provinces को भुक्ति को आ जाए and विषय provinces division को विषय को आ जाए और administrative units headed by उपारिका and विषयपति उपारिका हले head of the provinces and विषयपति हला तांकर विषय head माने provinces को division district head कोई पेरो Visaya was further divided into Vitti and villages. Vitti is a block and villages like Ga are the smallest units. So bureaucracy was not elaborate as that of Maurya Empire. Important officers देखिवा महादंड नायक justice delivery system, महाप्रतिहार chief of guards, दूतकस दूत associated with gift and grants, Sandhi विग्रहक basically minister of war and peace, Pilupati headed by elephants. अश्वपति हॉर्स हेड नरपति फुट सोल्जर हेड रण भंडाग्रिका बेसिकली भंडार स्टोर भंडार जानिछ स्टोर
सो से इंचार्ज ऑफ द स्टोर देन अक्ष पाताल धिक्रीता बेसिकली सुपरिंटेंडेंस ऑफ records and accounts. Okay, so these are important officers. आउ किछि officers आमे देखिबा किछि ऑथर सेही समय देखिबा एटा इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव रे कालिदास लिखिथिले अभिज्ञानम शकुंतलम विक्रम 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 और वशियम देन मालविका अग्निमित्रम वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुमार संभव रघुवंशम एंड मेघदूतम ऋतु संहार एंड ज्योतिर्विदा भरण. ओके, सो ये सब कालिदास लिखिथिले. देन कमंदक कमंदक कौन लिखिथिले नीतिसार. सो कमंदक कौन लिखिथिले नीतिसार. देन विशाखा दत्त लिखिथिले मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम. These are very very important exam रो. देन गुणाढ्य लिखिथिले बृहत कथा. शूद्रक लिखिथिले मिर्च कटिकम. देन बराहमिहिर लिखिथिले एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बराहमिहिर लिखिथिले पंच सिद्धांतिका जोटा कि 5 बुक्स पंच माने 5 बुक्स एंड बृहत संहिता मोस्ट नोटेबल थिले. 5टा बुक्स थिला पंच सिद्धांतिका सेथुर बृहत संहिता बराहमिहिर लिखिथिले सेटा को वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिला. सुश्रुत लिखिथिले सुश्रुत संहिता ऑन सर्जरी फर्स्ट सर्जन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सुश्रुत को कहा जाए सुश्रुत संहिता. वेगावट्टा बेसिकली अष्टांग्रिदय. देन धनवंतरी लिखिथिले आयुर्वेद वेरी इंपोर्टेंट. अमर सिंह लिखिथिले अमरकोश. आर्यभट्ट लिखिथिले आर्यभट्टियम एंड सूर्य सिद्धांत वेरी इंपोर्टेंट. एंड ब्रह्मगुप्ता ये भी साइंटिस्ट थिले. धनवंतरी भी साइंटिस्ट थिले. बेसिकली साइंस रो ये थिले. देन ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखिथिले ब्रह्मगुप्ता एंड भाषा लिखिथिले सोपाना भाषा दत्तम. ओके, सो दीज आर गुप्ता एजेस आपण देखिले एवं सही समय इंपोर्टेंट जोटा कि हमर एग्जाम पर्सपेक्टिव रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट. नेक्स्ट देखिबा पोस्ट गुप्ता एज. नेक्स्ट देखिबा कोन पोस्ट गुप्ता एज. सो पोस्ट गुप्ता रे बहुत सारा डिवीजन हेगला इंडिया और सो सक्सेसिव इन्वेजन ऑफ हुनास फ्रॉम सेंट्रल एशिया मेड द गुप्तास वेरी वीक and thus affected the economy. It is indicated by the gold coins of later Gupta ruler which have less gold content or more alloy. माने mix बेसी आसिला. mix आसिला माने जमले कि prosperity नाही. So decline Gupta empire resulted in emergence of numerous ruling dynasty in different parts of North India. The prominent among them were the Pushyabhutis of Thaneshwar, the Maukharis of Kannauj and the Maitrikas of Velavi. The political scene in peninsular India was not different. The Chalukyas and Pallava emerged as a strong regional powers in Deccan and northern Tamil Nadu respectively. Okay, so prominent कौन आसले पुष्यभूति थानेश्वर, मौखारीस कन्नौज, मैत्रिका of Vallavis, चालुक्य एंड पल्लवा जोटा कि साउदर्न रीजन रे तुमे पाइबो. बेसिकली डेक्कन रीजन रे पाइबो. बेसिकली फॉल हबार मेन रीजन कोन जानि समझ मैं कही होनार इन्वेजन सेंट्रल एशिया रो, फ्यूडाटरी रो राइज, डिक्लाइन ऑफ फॉरेन ट्रेड, लैंड ग्रांट. फर्स्ट देखिए वाकाटका डायनेस्टी 250 ରୁ 510 एडी. कैपिटल थिला बट्सगुल्मा जोंडे कि मॉडर्न वाशिम. So rise of Satavahana started growing weaker from 3rd century AD and Vakataka took the advantage of this situation and established a independent rule. Satavahana rise hela, Satavahana decline hela, Vakataka rise hela. So after Vindhya Shakti, King Pravarasena I ascended the throne
he expanded the Vakataka Empire to Malwa in the north and from Gujarat to south up to Kolhapur, Kurnool, Andhra Pradesh. Kolhapur was known as Kuntala at that time. देखो ए रीजन थिले सातवाहन वाकाटाका बर्तमान देखो ए रीजन ओके इनिशियली माने बेसिकली फ्यूडाटरी भला थिले प्रवर सेना बेसिकली performed 4 Ashwamedha sacrifices and took the title Samrat. There are 2 lines of Vakataka kings ruling different area. Main line है कौन ईस्टर्न महाराष्ट्र जोटा कि विदर्भ रीजन कोलेटरल ब्रांच माने कॉल्ड बेसिन ब्रांच ऑफ द वाकाटका रूल्ड इन द साउदर्न महाराष्ट्र ईस्टर्न महाराष्ट्र और साउदर्न महाराष्ट्र दुटा ब्रांच थिला लैंड ग्रांट्स their history can be reconstructed on the basis of a large number of land grants charter issued to the brahmanas alliance with Guptas. The daughter of Chandragupta II of the imperial Gupta family was married to the Rudrasena II of the royal Vakataka family. They also had matrimonial alliance with the Vishnu Kundins in eastern Deccan and the Kadambas in the south. So Vishnu Kundins eastern Deccan रे एवं Kadambas south रे यांको सहित यांकर matrimonial alliance हेगला बहुत बड़ा कथा हमें पढ़ी दिले चंद्रगुप्ता II के प्रभावती गुप्ता रुद्रसेना II को भाई ये हेले तो सही बहुत बड़ा यांकर डेवलपमेंट हैला सो कल्चरल इंपोर्टेंस पड़ना कल्चरली द वाकाटका किंगडम इज इंपोर्टेंट बिकॉज इट बिकम द चैनल ऑफ स्प्रेड ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर टू साउथ द सेकंड फेज ऑफ अजंता केव इज अट्रिब्यूटेड टू वाकाटका देन विंध्य शक्ति तांकर फाउंडर थिले बेसिकली वाकाटका डायनेस्टी रो केव नंबर 16 रे जोटे अजंता रे विंध्य शक्ति इज डिस्क्राइब एज द बैनर ऑफ द वाकाटका फैमिली एंड एज ए दीजो Vindhya Shakti also mentioned Vayu Purana. Then Pravarsena, his son Pravarsena, most important king of the Vakataka dynasty, only Vakataka king to bear the imperial title Samrat. Most expansion of the empire happened yanko samay hitla and in this period Vakataka contact with Gupta sହିତ janicho marriage hitla Prabhavati Gupta period जोटा कि एई समय रो मैरिज हला परे रुद्रसेना अजरी टू जो यांकर ये थिले तांकर मैरिज डेथ हे गेला तापर ये किंग हेले वाकाटा गुप्ता है ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ बोथ किंगडम मैरिज जोंडे कि गोटे मायरागन प्लेट रो डिस्क्राइब हिची कि मदर ऑफ टू किंग्स थिले ये देन देखिया मैत्रिकास रूलर एंड देयर कंट्री मैत्रिका देखो दिस एरिया ये वाकाटा का एरिया थिला देन मैत्रिका 475 रु 770 वल्लभी तंगर कैपिटल वल्लभी गुजरात रे अछि सौराष्ट्र एंड सौराष्ट्र एंड गाजियाबाद काठियावाड़ रीजन इट्स फाउंडर थिले भट्टारक्का वाज ए जनरल फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिके ऑफ गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश हिमसेल्फ रूलर ऑफ गुजरात एंड सौराष्ट्र विथ वल्लभी तंगर कैपिटल बेला इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ स्टेट कोन ना ऑल्दो मैत्रिका बेसिकली फ्यूडाटरी थिले गुप्ता अंडर थिले बट दे आर इंडिपेंडेंट हेले जते गुप्तार डिक्लाइन हैला सो अंडर द पावरफुल शैलदित्य ला मेन रूलर रियल फाउंडर को जाय आ वेरी इन्फ्लुएंशियल थिला ई समय रे मालवा राजस्थान पर्यंत से माने एक्सपांड करी गले बट चालुक्य ऑफ कल्याणी बातापी बादामी जानी थिवो बेसिकली चालुक्य पाखरु ए चालुक्य बढ़िले याको सब बड़ सफर होबाकू पड़िला देन मौखारी दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मौखारी एंड तुमरो पुष्यभूति ए दीटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुमे देखियो मौखारी जोंडे कि कन्नौज तंगर कैपिटल थिला रूल्ड फ्रॉम कन्नौज इट रिप्लेस पाटलिपुत्र एज ए पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया आगु पाटलिपुत्र थिला मौर्यन गुप्ता धीरे धीरे सेंटर चेंज होला स्टॉन्च हिंदू था ट्राइड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर held its sway under Maukhari Buddhism मध्ये थिला vassal state ना Maukhari were subordinate ruler of Guptas and later of the Harshas. Maharaja and Maharaja Dhiraja Isana Varman was the first Maukhari ruler to adopt Maharaja Dhiraja.
आगो को या पर बहुत सारा स्टोरी अछि देखिबा। Asgard seal inscription throws light on literary works by the patron and poets under Maukhari. So contacts with Sasanian Empire through the gift of the game of chess. Maukhari established contact with Sasanian Empire. So Pushyabhuti ultimately succeeded Maukhari. केमिति पुष्यभूति succeed कला Maukhari सेटा ही आमे देखिबा आगो को सेटा ही तुमरो important पाठ। So कन्नौज ये मौखारी then पुष्यभूति of Thaneshwar. So Pushyabhuti of Thaneshwar ruled her on their contribution 550 to 647. So the founder थिले कियण ना पुष्यभूति रो तांकर बापा थिले जोंडा कि गुप्ता रो अंडर जनरल थिले यांकर पुष्य हर्षवर्धन बापा थिले प्रभाकर वर्धन तांकर झियो को बाहा देले राज्यश्री को मौखारी किंग गृह बर्मन को बाहा देले कन्नौज रे जो मौखारी एबे देखले तांको बाहा देले एवं कन्नौज तांकर आली करनेले बट हर्षवर्धन पिक्चर केतले आसिले ना जेतले तांकर गृह बर्मन को मर्डर कर देले पालास एंड गौडस एंड बेसिकली चालुक्यास एमाने जेतले मर्डर कर देले सेतेबेले बेसिकली हर्षवर्धन को भाई रो भी डेथ हेला ताको भी फसे देले बापांकर डेथ हेला हार्ट अटैक हेला भौणी को बंचेवा जायगी हर्षवर्धन बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट किंग हेले दीटा को मिसे देले पुष्यभूति आउ थानेश्वर आउ मौखारी ये दीटा को मिसेगी हर्षवर्धन एम्पायर बनेले कन्नौज कैपिटल करले बाणा लिटरेरी सोर्सेस कोन इंफॉर्मेशन पाइले बाणाभट्ट हर्ष चरित्र एंड हुएनसांग रो सीयू की एथु बहुत सारा इंफॉर्मेशन करजे एंड मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सोनपा इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉपर सील एंड बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नालंदा इंस्क्रिप्शन ऑन क्ले सील ये सब इंपोर्टेंट फैक्टर थिला सकलतर पथा आफ्टर हिज एक्सेशन हर्षवर्धन united his kingdom with that of his white widowed sister Rajyasri and shifted capital Kannauj जोंडा की कोइली स्टोरी टा लॉर्ड ऑफ नॉर्थ कुड येट सकल उत्तर पथा रो सकल माने लॉर्ड Harsha wanted to expand in Deccan but he was defeated by Pulkesin II the Chalukya ruler तांको हरै थिले ये भी गोटे बाणभट्ट हिटा मेंशन करथले बट पुलकेसिन II रो जोंडा की तांकर इंस्क्रिप्शन रे हमको मिलथिला आहोल इंस्क्रिप्शन रो मिलथिला ये हर्षा पीरियड हुएनसांग यांको समय आसीथिले एडे इंप्रेस हेथिले हर्षांकर काम एवं बुद्धिजीम को पेट्रोनेज सेटु करथिले कन्नौज रे बहुत समय देथिले आउ कैपिटल से थानेश्वर रु काई की कन्नौज करथिले काने कन्नौज कैपिटल थिले अवलोकितेश्वर बुद्धिसत्व on his advice Harsha accepted the throne of Kannauj with the title of Rajaputra and Shiladitya. Alliance with Maitrika, marrying his daughter with Dhruvabhatta of Maitrika, thus Vallavi became the sovereign. So देखो Vallavi ये देखो कहीं ना या को बहाला यहाँ कर जियो को बहाला हर्षा ध्रुवभट्टा को बहाला मैत्रिका रो princess. So Harsha contribution in art and architecture देखिबा. So basically so सुल्तानगंज बुंधा एही समय आपण माने देखिया को पाइबे. So it is the largest copper Buddha figure known from the time. It is the only remaining statue of the metal size of any size from the Gupta art. It was cast in pure unrefined copper by the lost wax technique. Right hand raised in Abhay Mudra, left hand held in downward in the palm, said indicative of granting favor. So printing, coloring, metal works, ivory work ये सब कन्नौज, वाराणसी, उज्जैन ये सब जगह होता है. लिटरेचर हर्षवर्धन कंपोज करथिले प्रियदर्शी ई क्वेश्चंस आसे यूनियन ऑफ उड्डयन एंड प्रियदर्शिनी तांको भितरे रत्नावली अलियंस ऑफ किंग उड्डयन एंड रत्नावली
and Nagananda self sacrifices of Jimutavahana. Okay, Vamsakhera copper plate inscription reveals that he was a skilled calligraphist. Then regional culture units such as Bengal, Odisha, Gujarat started during his time. Then Banabhatta लेखिथिले संस्कृत स्कॉलर थिले तांकर हर्ष चरित्र लेखिले काव्य स्टाइल थिले बायोग्राफी हर्ष कादंबरी लिरिकल प्रोज रोमांस ऊपर थिला एंड चंदिका शतका बेसिकली हिम्स ऑफ गॉडेस दुर्गा. देन जयसेना लेखिथिले रिकॉग्नाइज फॉर हिज लर्निंग इन हेतु विद्या शब्द विद्या एंड युग शास्त्र. सो ये सब थिला. देन मयूर भट्ट रोड सूर्य शतक. हुएनसांग सी.यू.की कंटेम्पररी स्कॉलर थिले भारवी रोड कीर्तार जूनियन एंड कुमार दास रोड जानकी हरण. ये सब लिखित. So these are basically major part of Harsha period. So on the same line administration देखिबा गुप्ता समय जहाँ थिला लैंड ग्रांट्स लॉ एंड ऑर्डर से सही भलिया मेंटेन करी चलथिले. सेमती एम्पायर डिवीजन जो भुक्ति डिस्ट्रिक्ट विषय ये सेम तुमर एठी पाइबो. सोसाइटी सेमिति जेमिति गुप्ता समय थिला क्षत्रिय हो पोजीशन वुमेन एक्जेक्टली सेम थिला. टैक्स स्ट्रक्चर भी सेम थिला सही समय गुप्ता समय. सो ऑल is well. So thank you guys, thank you ancient history देखंतु बहुत सारा इनफॉरमेशन पाइबे प्रीलिम स्पेसिफिक. देन मु आगु को आनिबी मेडिएवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री सब ओडिसा पार्ट भी मध्ये आनिबी. विल ट्राई टू कवर as much as we can. Thank you guys, thank you for watching. God bless you all. जय जगन्नाथ, नमस्कार.